that India is a strong India, India is a new Bharat, and India can make its own heritage, its own history that is being created today when this ceremony will be taking place in the Central Hall of the Parliament, when Prime Minister will be moving with the copy of the Constitution from the Central Hall to the new Parliament building. Absolutely. So in 2 minutes from now, we are expecting the live proceedings, the event that is now being streamed live, and this is for the Central Hall. Akansha, those pictures that are coming in, and what exactly sets Prime Minister Narendra Modi apart from all of the leaders there, that he made it a point that he will go all the way to the back, to the last row of the Central Hall, and he will meet and greet the parliamentarians even from the opposition side. Well, absolutely. The visuals are coming in. MPs have now moved to the Central Hall, and there we can see Prime Minister Narendra Modi going to each and every leader. In fact, shaking hands with few. We saw the visuals of him shaking hands with Farooq Abdullah and others. So going around, even going to the last row with folded hands before all these MPs, because this is a very historic, a very emotional moment for India. Yesterday, Prime Minister also said that this is a very emotional moment for him as well. He spoke about the contribution of a lot of leaders, from leaders to MPs to even journalists, and this is definitely a historical and emotional moment. But the special program has started after the photo session has gotten over. During this special program, a pledge will be taken to make India a developed nation by 2047, and also the historical legacy of Parliament will also be mentioned in this, and it is expected that Prime Minister, Lok Sabha Speaker, as well as Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary, Mallikarjun Kharge, all of these people will speak, but our eyes will be on three speakers, mainly Menka Gandhi, Manmohan Singh, and because Menka Gandhi has been the longest MP in Lok Sabha, Manmohan Singh has been the longest serving MP in Rajya Sabha. So it remains to be seen whether Manmohan Singh speaks during this special program or not, but definitely now after this, the transition that are coming in. Lok Sabha Speaker who has arrived, Vice President and Chairman of the Rajya Sabha Jagdeep Dhankar, who has arrived, Prime Minister Narendra Modi already there, as he's been acknowledging all of the other parliamentarians as they will be now making their way to the dais, and now the live program begins. का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित होने का दिन है। ये दिन परिवर्तन का है, एक नए शुभ आरंभ का, पुरातन से नवीनता की ओर बढ़ने का, परंपराओं को साथ लिए आधुनिकता के साथ कदम ताल करने का, और इसी पल को एक साथ जीने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन।
कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आप सभी को नमस्कार। I am feeling proud privileged to be the part of this historic occasion where we have assembled in this iconic central hall for the celebration of our 75 years of the parliamentary democratic journey and shifting to the new parliament building. First of all, I welcome Honorable Vice President of India and the Chairman of Rajya Sabha, Shri Jagdeep Dhankar ji, to gracing this momentous occasion. I welcome the most popular, dynamic, Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who has been real force behind giving us the new temple of democracy in the shape of new state-of-art Parliament House building, which is emerging as a symbol of Atmanirbhar Bharat. I also welcome Honorable Speaker Shri Om Birla ji, Deputy Chairman Rajya Sabha Shri Harivansh ji, Leader of the Rajya Sabha Shri Piyush Goyal ji, Leader of the Opposition Rajya Sabha Shri Mallikarjun Kharge ji, Leader of the largest opposition party in the Lok Sabha Shri Adhir Ranjan Chaudhary ji, all my colleague ministers, other senior leaders, fellow MPs from both the houses of the Parliament, to this function which has been organized to commemorate the last sitting of both the House held yesterday in the respective chambers. Today onwards, our two houses of the Parliament shall have their sittings in the new Parliament House building. We all know that this central hall has witnessed transfer of power from Britain to Bharat. The formation and adoption of our constitution by the Constituent Assembly has been host to some very important occasions like rollout of GST, one tax, one nation, a finest example of cooperative federalism in our parliamentary democracy. There were 3 joint sittings of both the houses of the Parliament for resolving the deadlocks under the Article 108, that is the Dowry Prohibition Bill 1959, the Banking Service Commission Repeal Bill 1978, Prevention of Terrorism Bill 2002. You all know that Lok Sabha and Rajya Sabha were sitting in this building since 13th May 1952. Along with all my fellow members of the Parliament and other stakeholders of this Parliament, I am very happy and enthusiastic about the functions of the two houses of the Parliament henceforth from the new building, which is the symbol of new and emerging Bharat, paving the way for the developed nation as envisaged by Prime Minister by 2047. At the end, I would like to say that our journey so far is marked by excellent achievements, memorable experience, difficult challenges, remarkable milestones. As we go ahead, let us learn from our previous experiences so far and reaffirm our commitment to our historic democratic values and tirelessly work for the betterment of the person last in the queue. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब संबोधन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी लोकसभा में कार्यकाल की दृष्टि से वरिष्ठतम वर्तमान संसद सदस्य श्रीमती मेनका गांधी जी को। Honorable Vice President, Chairman of the Rajya Sabha, Honorable Speaker, Honorable Prime Minister,
ministers, and esteemed colleagues of this distinguished House. Actually, I'm as surprised to be here as you are to see me. This is a historic day today. I'm proud to be part of this historical moment when a government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji has undertaken to repair the deep-rooted asymmetry and to give an equal share in India's future to all of us women. I'm grateful for the honor you have given me of speaking about my years in Parliament. We are going to a new building, and hopefully this grand edifice will reflect the aspirations of a new Bharat. Today, I have been entrusted with the responsibility of addressing this esteemed assembly as the most senior parliamentarian in the Lok Sabha. I entered Parliament at the age of 32, 9 years after the death of my husband. My debut was as Minister for Environment. Today, 35 years later, I have spent most of my adult life in this institution, and I have seen 7 prime ministers and the shaping of grand history. It has been an arduous, rocky road. I had several terms as an independent member and finally joined the Bharatiya Janata Party under Shri Atal Bihari Vajpayee ji's leadership in 2004. Since then, I have remained a proud member of the BJP as well as this august House. Being a member of Parliament is an immense responsibility, as it entails safeguarding the trust of lakhs of voters who elect us to be their voice. You are given power, but this power must always be used for their good. The job demands unwavering commitment, moral rectitude, and courage. Basically, it demands great love for your country and infinite kindness towards all. Each one of us gets this opportunity to make a difference, provided we sublimate our own ambitions and see ourselves only as vessels or bridges or protectors of all the beings that need us, the last person in India who believes himself forgotten. People who cannot navigate for themselves and appoint us as their helmsmen. I have tried to make the most of every minute to bring about change wherever I am, whether as Environment Minister, when many institutions and laws that safeguard us were passed, as Social Justice Minister setting up Alimco, which now looks after all the disabled in the country, Childline, which was regarded internationally as the best institution for looking after street children, stopping child labor in the carpet industry. You can change things wherever you are. For instance, in the opposition as a BJP member, as chairperson of the often ignored Assurances Committee, we changed the way people were experimented on by pharmaceutical companies. They were not paid or even asked before becoming guinea pigs. This was changed by us. During Atalji's time, we brought in the vital red and green dot on foods, allowing people to know whether they were eating vegetarian, non-vegetarian food. We repaired an institutional deception by food companies. No service, no job is too small that it should not be taken seriously. My happiest moment was being given the responsibility by the Prime Minister, who coined the phrase Beti Bachao, Beti Padhao. Within 2 years, we changed the thought of the country, the entire thought of the country, and the statistics show that it is a lasting change. From 130 women per 1,000, a shameful statistic, it rose to 950. Crores of girls were saved. Not only that, it is now seen as a shame and a crime to do away with girl children, whether in the womb or newly born. Now that we are going into a new building, a new phase, I want to tell all the young people here that politics is never fulfilling unless you have a grand passion and a commitment outside it, unless a fire of curiosity burns within you. No service is too small in the service of Mother India. What I have learned is that each constituency is your family. Within my family, there are a million microcosms of individual families. Each of them depend on us. We are a part of their lives as they are of ours.
I have seen my primary duty to look after each family that has placed itself in my care by electing me, by seeing me as one of their own. In this matter, I wish to say that the Prime Minister has seen beyond people as a statistic and has meticulously seen to the needs of each individual family. Opening bank accounts, giving dignity in the form of toilets, home water taps, building homes for the poor, gas cylinders, giving young people loans, skilling them, protecting them through the largest pandemic in history, saying that no one remained hungry. Before I end, I would like to tell you a few things that I have learned in my long journey so far. Never give up. There are times in all our lives where the world sits heavy on our shoulders and there doesn't seem any path ahead. It will take courage, determination, and a commitment to something larger than ourselves to forge ahead. Have faith in the goodness of your fellow man. Quieten your mind and soldier on. Believe in yourself. You are an instrument of goodness. If you fight for good, you will always be protected. Use the pain that we all have in our hearts to make yourself a better human being, not to embitter you. Use the pain in your heart to see the pain in the hearts of millions of beings around you and dedicate your life to them. I want to speak to all the women here. The world is still an unequal place, and we as women need to be the greatest champions of and for each other. We need to support and protect each other, especially young women across the social spectrum who lead a marginalized existence so that they have the ability to forge their own destinies. There is no greater power in the world than the power of empathy and kindness, and this transforms the life of someone weaker than you. Kindness serves as its own reward. The greatest bank balance that we will ever possess is that of good deeds that we leave in our wake. That is the only legacy that will remain. My faith in God is unwavering. I see Him in everyone and everything. I see everything as sacred. I leave you with one thought. We are all part of one divine thread, and we are all connected, closer than we can imagine. Let us, irrespective of any differences we may have, wish happiness, protection, and on this holy day of Ganesh Chaturthi, a life free of obstacles for us and all our countrymen. Illuminate the lamp of goodness in our hearts. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बिल्कुल सही कहा। ये वो देश है जहां बेटियां आगे बढ़ती हैं। ये वो देश है जहां परंपराओं के साए में आधुनिकता पनपती है। ये वो देश है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका नारा है विश्वगुरु भारत, ये देश हमारा है। अब मेरा सादर अनुरोध लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी से कि वे अपना संबोधन प्रस्तुत करें। Honorable Vice President of India, Honorable Speaker Lok Sabha, Honorable Prime Minister of India, Parliamentary Affairs Minister of both the houses, opposition leaders, Kharge ji, all my senior leaders and distinguished, esteemed colleagues of both Lok Sabha and Rajya Sabha. Having seized this opportunity without making any compunction, without mincing any word, I must state that I feel elevated and elated of having been stood in this podium, which had witnessed a caravan of historical episodes and numerous momentous events in the midst of the galaxy of luminaries who had rigged up their brain and burned the midnight oil to frame the Constitution of India in this august house, which is called at the time Constituent Assembly. So we are proud of all of them, numbering 389 members, including 296 from British India and 93 from princely states. In this house also, in this house,
in the year 1947, 22nd January, the objectives resolution numbering 8 was passed, was adopted, which was proposed by Jawaharlal Nehru ji also, which had inspired the shaping of our constitution in subsequent stages also. So now, in this august house, all of us are well experienced and known the journey, the odyssey of our constitution. From colonial past to independent India, we have observed the transition of the destiny of this great country named after India. It is astonishing to note that those 389 members intensively discussed among them for 2 years, 11 months and 19 days and produced the largest constitution of the world, led by Baba Saheb Ambedkar, the father of Indian Constitution. We have been gifted with 395 articles. Also, 22 parts and 8 schedules. So naturally, the house, which is called Central Hall, it is a historic hall. It is not. It will not be known by simply its architectural splendor, but its illustrious legacy. Now I come to the point that our ability to attain developed nation status by 2047 hinges on the active involvement of our citizens and the unwavering dedication of their representatives. The groundwork laid in the formative years of our nationhood and also the subsequent years has empowered us significantly. However, we are confronted with intricate challenges that require immediate attention and resolution as we progress towards this objective. I don't have any idea of what is called and how a country to be recognized as developed country by any designation. I do not have any idea of any global consensus is existed or not, because when we see other developed countries, among the various key determinants, one determinant is always followed, that is Human Development Index. And insofar as Human Development Index, India has been lagging behind and we are ranked 131 out of 189 countries. At present, disconcerting reports reveal that the top 10% of India's population controls a staggering 77% of nation's total wealth. In 2017, a staggering 73% of wealth generated has reportedly gravitated towards the wealthiest 1%, while staggering 670 million Indians constituting the poorest half of the population saw their wealth increase by a mere 1%. This stark disparity presents a crucial challenge in ensuring that millions of people living below the poverty line have access to fundamental necessities like food, shelter and healthcare, a prerequisite for advancing towards developed nation status. While India boasts of a sizable youth population, high unemployment rates pose a significant hurdle to leveraging this demographic advantage. Addressing these challenges paramount, necessitating a concerted focus on job creation and the encouragement of entrepreneurship. It is essential to enable India's youthful population to contribute substantially to the country's economic growth and development. Despite India being the world's 5th largest economy, our per capita GDP falls far behind that of developed nations. Tackling this economic growth challenge requires pro-growth government policies, maintaining low inflation, reducing interest rates, alleviating unemployment, fostering a skilled workforce, bolstering purchasing power, stimulating demand, and enhancing the healthcare and education sector.
India must prioritize the development of a globally competitive, labor-intensive manufacturing sector capable of generating significant employment opportunities. In sum, addressing the pressing issue of high youth unemployment is a pivotal step for India's march toward developed nation status by 2047. I am impatient. I do not want to vote till 2047. Why not before 2047? To realize the vision of becoming developed nation, India must pursue a growth trajectory that is both comprehensive and sustainable. Economic growth must be all-inclusive, benefiting every citizen. An overarching focus on human development, encompassing access to healthcare, education and essential services must be implemented holistically. The challenge of transforming India into a developed nation by 2047 are substantial, encompassing poverty, infrastructure deficit, and environmental sustainability. By implementing a holistic strategy that encompasses infrastructure development, attraction of investment, enhancement of education, promotion of innovation, social welfare, environmental conservation, paying emphasis on manufacturing and integration of technology, India can pave the way for its emergence as a developed nation. It is only with unwavering determination, collective commitment that the country can realize this visionary goal and unlock its potential on the global stage. I will conclude by saying that धरती सिखाते हमने सबको बोझ उठाना, गगन सिखाते हमने ऊपर उठते जाना, सूरज की लाली से सीखा जग आलोकित करना, चंदा की किरणों से सीखा सबको पीड़ा हरना, पर्वत ने सिखाए हमने दृढ़ संकल्प बनाना, नदी सिखाए हमने आगे बढ़ते जाना, सागर की लहरों ने सीखा दुख सुख सहे जाना, और तूफान ये सिखलाते हैं आफत में ना घबराना और आफत से टकराना. हम चाहते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर should be maintained in a judicious manner and also in presence of all the guiding light of our country. I must suggest that India is not a homogeneous society, rather it is a heterogeneous society. But now the need of the hour is to maintain the harmonious society. With this word, I am concluding my speech. Thank you. Jai Hind, Bande Mataram. धन्यवाद सर. अब मेरा सादर आग्रह है राज्यसभा में सदन के नेता श्री पीयूष गोयल जी से कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें. राज्यसभा के सभापति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, उपसभापति श्री हरिवंश जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री आदिर रंजन चौधरी जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय सांसदगण, नमस्कार. गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा सभी को सुख एवं शांति प्रदान करें और देश की प्रगति के लिए हमारे प्रयासों को सफल बनाएं. हमारे संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी तथा संविधान सभा के माननीय सदस्यों की स्मृति को मेरा कृतज्ञ वंदन. विगत 75 वर्षों में देश की सेवा करने वाले सभी सम्मान्य सांसदों को भी मेरा सादर नमन. कल हम सभी ने इस भवन में सार्थक चर्चा की और अपनी यादों और अनुभवों को सबके साथ साझा किया. आज नए संसद भवन में प्रवेश करना एक ऐतिहासिक पल है जो हम सभी के लिए यादगार रहेगा. इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. नया संसद भवन हमारी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता का जीवंत उदाहरण है. नए संसद भवन में स्थापित प्राचीन सेनगोल से प्रेरणा लेकर
हम सभी कर्तव्य भावना से देश सेवा के तत्पर रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एक वैश्विक शक्ति बन रहा है। नया संसद भवन अपने विशाल और सुंदर स्वरूप में एक नए विश्वास से भरे आत्मनिर्भर भारत का पहचान बनेगा। पार्लियामेंट हमेशा से एकता का प्रतीक रहा है। यह हमारे संविधान के मूल्यों की सुरक्षा करता है, जो विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद हमें एक राष्ट्र के रूप में बांधने का काम करता है। यहां अनुभव का ज्ञान और युवाओं की ऊर्जा मिलकर 140 करोड़ देशवासियों के उज्जवल भविष्य को आकार देने का काम करते रहेगी। और मैं समझता हूं आज का दिन एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। कई सारे विषय रहे, आजादी के बाद कई सारे चुनौतियां रही। शायद कई सारी चुनौतियां समय पे अगर समाधान कर दिया होता तो और जल्दी 2047 के पहले भी देश विकसित बन जाता। पर हमारे पास जो वर्ष मिले, जो काम करने का देश ने सेवा करने का मौका दिया, उसमें जो अभूतपूर्व प्रगति देश ने देखी है, मैं समझता हूं इसको आगे लेकर इस देश को नई ऊंचाइयों तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करेंगे। लक्ष्य बड़ा है, राह कठिन है, पर मुझे पूरा विश्वास है संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करेंगे और अमृत काल में एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत के सृजन का आधार बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सादर धन्यवाद सर। अब मेरा सादर अनुरोध राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि वे अपना संबोधन प्रस्तुत करें। Honorable Vice President of India, Honorable Prime Minister, Honorable Speaker Lok Sabha, Honorable Leader of the Rajya Sabha, Honorable Sri Adiranjan Chaudhary ji, Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Honorable Members of Parliament and all the respected leaders. We have all gathered here today to commemorate the rich legacy of the Parliament of India in this historic Central Hall. When we talk about Indian parliamentary heritage, the hallowed precinct of this Parliament House and the Central Hall, where we have gathered today, hold a very special significance. The Constitution of India is the bedrock of Indian democratic polity. It is in this very Central Hall that the Constituent Assembly held its sittings from 1946 to 1949, spanning a period of 2 years, 11 months, and 17 days. Today, we humbly recall the phenomenal contributions made by Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, Pandit Jawaharlal Nehru ji, the first Prime Minister and architect of modern India, Sardar Vallabhbhai Patel, the first Home Minister of India, and Dr. B.R. Ambedkar, architect of Indian Constitution.
It is also an occasion to recall with gratitude the contributions of Sri G.V. Malvankar, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and also acknowledge the collective contribution by members of the Constituent Assembly, Provisional Parliament, and First and all subsequent Lok Sabha. This central hall was witness to Pandit Nehru's tryst with destiny speech on the eve of India's independence. And yesterday, the Prime Minister also mentioned this in his speech. I am thankful to you because you remembered this historic speech on this yesterday's occasion. Sir, the India's independence during his speech, the Pandit Nehruji inter alia stated, which I quote, long years ago we have made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measures, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to new, when an age ends, and when the soul of the nation, long suppressed, finds utterances. As the clock struck 12, all the members of the Constituent Assembly took the following pledge. At this solemn moment, when the people of India, through suffering and sacrifices, have secured freedom, I, a member of the Constituent Assembly, do dedicate myself in all humility to the service of India and her people, to the end that this ancient land attain her rightful and honored place in the world, and make her full and willing contribution to the promotion of the world peace and the welfare of the mankind. These words spoken on the day of this historic speech of Pandit Jawaharlal Nehruji. I wish to emphasize at this juncture that this is all due to the collective and dedicated effort by parliamentarians cutting across the party lines over the past 7.5 decades. This rich legacy has formed a strong foundation for India's growth as a powerful democratic nation. Every nook and corner of the Parliament House has witnessed the evolution of our parliamentary democracy over the past 75 years. As we bid adieu to the Parliament House and move to the new Parliament building today, I am overwhelmed with emotions and tinge of pathos. We would, of course, be continuing our parliamentary duties in the new Parliament building, but will miss the Parliament House. The success of the institution lies in the upholding constitutional values and ideals. The idea that institutions are sacrosanct and essential for the success is a fundamental principle in governance and development. We should commit ourselves to adhere to and preserving the constitutional values and parliamentary traditions as the country moves ahead in effectively performing parliamentary duties and in our endeavors for the growth of our nation. To build this country
forgetting our parties, political parties, we should be one to build the nation, to protect the nation, to protect the constitution, to protect the democracy. This must be our aim. With these words and one quote I will say, no man can be grateful at the cost of his honor. No woman can be grateful at the cost of her chastity. And no nation can be grateful at the cost of its liberty. So, to protect our liberty, to protect our integrity, we must work all together. That is the only way to build the nation. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मेरा माने आग्रह है माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप हम सभी को अपने शब्दों द्वारा अनुग्रहित करें। माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, संसदीय कार्य मंत्री जी, प्रतिपक्ष के नेता, लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय संसद सदस्यगण, आज संसद भवन के इस ऐतिहासिक कक्ष में जो हमारी देश की आजादी का साक्षी रहा, जो संविधान निर्माण का साक्षी रहा, जिसमें अनेक परिवर्तन एवं ऐतिहासिक निर्णय हुए, इसी केंद्रीय कक्ष में माननीय राष्ट्रपति जी का उद्बोधन में हमें मिला। विश्व के कई राष्ट्र अध्यक्षों ने यहां संबोधन करते हुए हमारे लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त की और आज इस केंद्रीय कक्ष से हम सब लोग नए संसद भवन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये नया संसद भवन हम सब के लिए नई आकांक्षाओं, नई अपेक्षाओं और नई उम्मीद, नई उमंग के साथ होगा, मेरी ऐसी आशा है। आज इस अवसर पर उन सब स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए, हमारे कल के लिए अपना वर्तमान बलिदान कर दिया। मैं आज उन महान नेताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस केंद्रीय कक्ष में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिन्होंने देश में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने में अपना दायित्व निभाया। आज हम उन सभी मान्य सदस्यों को भी बात कर रहे हैं जो हमारे बीच में लेकिन जिन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश की प्रगति में योगदान दिया। मैं आज संसद के उन सभी माननीय सांसदों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिनके लंबे संसदीय अनुभव का लाभ आज हमें मिल रहा है। ये संसद भवन अनेक ऐतिहासिक घटनाओं, निर्णयों और परिवर्तनकारी कानूनों के निर्माण का साक्षी रहा है। हमारी संसद कई घटनाओं का मंच रही है जिन्होंने 75 वर्षों में इस देश को एक ऐसा स्वरूप दिया है जो दुनिया में एक नई ताकत और सामर्थ्य रखता है। हमारी संसद देश की करोड़ों जनता की अभिव्यक्ति एवं भावनाओं का माध्यम रही है, जहां हमें लोकतांत्रिक संस्कृति के अनुरूप चर्चा और संवाद से अनेक चुनौतियों का समाधान निकाला है और कई श्रेष्ठतम प्रतिमान स्थापित की हैं। इन 75 वर्ष की संसदीय लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में हमने देश में कई क्रांतिकारी बदलाव भी किए। आज जनता नए भारत के लिए आकांक्षी है। आज लोगों को हमसे अपेक्षाएं बढ़ी है, आकांक्षाएं बढ़ी हैं, उम्मीद बढ़ी है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने संवैधानिक दायित्वों का शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करें और उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं
और उम्मीदों को पूरा करें और आकांक्षी भारत के सपनों को साकार करें। मान्यवर, हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे कालखंड के जनप्रतिनिधि हैं जिस समय भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी लोकतांत्रिक संस्कृति और हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व के कारण हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में लेकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान के लिए भारत एक सार्थक भूमिका निभा रहा है। आज हम नए भवन में प्रवेश कर रहे हैं। नए भवन में प्रवेश करते समय विकसित भारत बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को हम दोहराने का अवसर भी है। हमारा संकल्प है कि हम इसी संसदीय लोकतंत्र से सामूहिक चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति और कठिन परिश्रम से सारे देश की जन भागीदारी के साथ इन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। विश्व के सबसे बड़े संसदीय लोकतंत्र होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हमारी संसद हर एक मुद्दे पर चर्चा करे, सार्थक सकारात्मक दिशा दे, कानून बनाते समय सारगर्भित चर्चा हो, सकारात्मक के साथ चर्चा हो, ताकि हम देश को और अधिक समर्थ एवं समर्थ बना सकें। और इसमें हमारी संसद की उल्लेखनीय भूमिका होनी चाहिए। आजादी के इस अमृत काल में हम 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। विकसित भारत बनाने का ये लक्ष्य हमारी संसद के माध्यम से साकार होगा। हम ऐसे संकल्प की प्रतिबद्धता के साथ नए भवन में प्रवेश करेंगे जहां हमारी भागीदारी भी होगी, जनता की अपेक्षाएं भी पूरी होगी और नए आकांक्षी भारत और 2047 में विकसित भारत के सपने को भी पूरा पकाएंगे। आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन, ऐसे शुभ दिन पर अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां, अच्छी प्रथाएं, अच्छे अनुभव हम साथ लेकर जाएं और नए संसद भवन में उनको स्थापित करें ताकि विश्व के लिए भारत का लोकतंत्र मार्गदर्शक बन सके। नया भवन हमारे देश की आकांक्षी जनता के लिए परिणामदायक हो, परिवर्तनकारी हो, ताकि हमारे संविधान निर्माताओं ने समानता, न्याय और बंधुता का जो संदेश दिया है उसे हम पूरा कर सके। हम अपनी संसद को देश की जनता की सेवा में सच्चे भाव से समर्पित करें। इसी अपेक्षा के साथ मैं पुनः इस भवन को उन सब लोगों को जिनका इस लोकतंत्र को स्थापित करने में, लोकतंत्र की मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान रहा, उन सबको भी नमन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मेरा विनम्र अनुरोध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप विशिष्ट जनों की सभा को संबोधित करें एवं हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि, सभी माननीय सांसदगण, आपको और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहां
विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सम्मान्य सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आजादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठक यहां शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी सभी सरकारों के दरमियान अनेक अवसर आए जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहां पर भारत के भाग्य को गढ़ने के पर विचार किया, सहमति बनाई और निर्णय भी किए। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्ट्राध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है। हमारे राष्ट्रपति महोदयों के द्वारा 86 बार यहां संबोधन किया गया है। बीते 7 दशकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुजरे हैं, जिम्मेवारियों को संभाली है, अनेक कानूनों, अनेक संशोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। और कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किए गए हैं।
इसी गृह में पास किए गए। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी। इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी जो सुविधाएं हैं एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरूरतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो। आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर के संसद के भवन में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं। माननीय सांसदगण, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे। हर घटना इस बात का गवाह दे रही है कि आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना, यही ऊर्जा इस देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है। ये हम देख सकते हैं। और मेरा विश्वास है
देश जिस दिशा में चल पड़ा है, इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे, परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है, उसके आधार पर विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत का गवर्नेंस का मॉडल, यूपीआई, डिजिटल स्टैक, मैं इस G20 में देख रहा था, मैंने बाली में भी देखा। टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेकर के भारत का नौजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व के लिए कौतुक भी है, आकर्षण भी है और स्वीकृति भी है। हम सब उस ऐसे कालखंड में हैं, मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं। ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दायित्व निभाने का अवसर आया है, और हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले 1000 साल में नहीं रहे होंगे। गुलामी के जंजीरों ने उसके एस्पिरेशंस को दबोच के रखा था। उसकी भावनाओं को तहस नहस कर दिया था। आजाद भारत में अपने सपने संजो रहा था, चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन मिलकर के आज जहां पहुंचे हैं, अब वहां वो रुकना नहीं चाहता है। वो एस्पिरेशनल सोसाइटी के साथ नए लक्ष्य गढ़ना चाहता है। जब एस्पिरेशन सोसाइटी सपने संजोते ही हो, संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो, तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का निर्माण करके उज्जवल भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व हम सभी सांसदों का सविशेष होता है। संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए। ये हम सबकी भावना भी है,
कर्तव्य भी है और एक एक देशवासी की हमसे अपेक्षा भी है। हम जो भी रिफॉर्म करें उसके मूल में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सर्वोच्च पद पर होना चाहिए, प्राथमिकता पर होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूं, क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या? जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते। पचहत्तर साल का हमारे पास अनुभव है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाए उससे हमने सीखा है। हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है। इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने, हमारे संकल्प जुड़ जाए, हमारा सोचने का दायरा बदल जाए, हमारा कैनवास बड़ा हो जाए, तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं, उस तस्वीर का खाका खींच सकते हैं, उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को वो भव्य दिव्य मां भारती के हम उनको सुपुर्द कर सकते हैं। दोस्तों, अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलझना वो वक्त चला गया है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हमसे शुरुआत होती है, हर नागरिक से शुरुआत होती है। और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे, हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री लिखते थे कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरलिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी के जमाने में ठीक तो नहीं होगा। लेकिन 5 साल के भीतर भीतर देखा, दुनिया भारत के आत्मनिर्भर मॉडल की चर्चा करने लग गई है। और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो, एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल, क्या इस देश को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? कृषि प्रधान देश हम कहते हैं, खाने का तेल क्या देश बाहर से लाएगा? बहुत समय की मांग है कि हमें आत्मनिर्भर भारत को संकल्प को पूरा करना, ये हम सबका दायित्व है। उसमें दल आड़े नहीं आते हैं, सिर्फ दिल चाहिए, देश के लिए चाहिए। हमें अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में ही कदम रखने होंगे। और मैंने एक बार लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो, हमारी प्रक्रिया में पर्यावरण पर कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। हमारे डिजाइनर, हमारे यहां निर्माण हो रही डिजाइन्स, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हमारे हस्तशिल्प, हर क्षेत्र में अब हमें
वैश्विक मापदंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए, तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना झंडा फहरा सकते हैं। मेरे गांव में मेरा सबसे अच्छा माल हो, इतनी बात नहीं चलेगी। मेरे राज्य में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। दुनिया में मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा, ये भाव मुझे पैदा होगा। हमारी यूनिवर्सिटीज दुनिया के अंदर टॉप रैंकिंग में आए, अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है। हमारे शिक्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली है, एक खुलापन है, सर्व स्वीकृत बनी है। उसके सहारे अब हमें चल पड़ना है और दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में, अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहां, और जब मैं दुनिया को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो उन सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है, पर प्राप्त तो अभी करके रहना है। ये हमारा संकल्प होना है। आज हमारे देश का नौजवान खेल जगत के अंदर दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है। टियर 2, टियर 3 सिटी से, गांव, गरीब परिवारों से, गांव से देश के नौजवान, देश की बेटे बेटियां आज खेलकूद के जगत जीवन में हमारा नाम रोशन कर रही है। लेकिन देश चाहता है और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेलकूद के हर पोडियम पे हमारा तिरंगा भी लहराता होगा। हमें अब पूरा हमारा दिमाग क्वालिटी पर फोकस करना ही होगा, ताकि हम विश्व की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल और भारत के सामान्य मानव के जीवन में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के प्रति जो एस्पिरेशन बढ़ा है, उसको हम एड्रेस कर पाए। और जैसे मैंने कहा कि हम भाग्यवान हैं कि हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है। हमारा और भी एक भाग्य है कि हम उस समय हैं जब हिंदुस्तान युवा देश है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा जन आबादी वाला तो देश बने ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी आबादी, उसमें भी सबसे युवा, ये पहली बार हुआ है। जिस देश के पास ये युवा शक्ति हो, युवा सामर्थ्य हो, तब हमें उसकी टैलेंट पे भरोसा है, हमें उसकी संकल्प शक्ति पे भरोसा है, उसकी साहस में हमें भरोसा है। और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंक्ति में नजर आना चाहिए, वो स्थिति पैदा होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया को स्किल मैन पावर की बहुत बड़ी जरूरत है, और भारत विश्व की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने आप को सज्ज कर सकता है और उन आवश्यकताओं को पूरी कर करके दुनिया में अपनी एक जगह भी बना सकता है। और इसलिए विश्व में उनकी आवश्यकता के लिए किस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, किस प्रकार के उनको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, उस स्किल मैपिंग का काम भी चल रहा है। और उस स्किल मैपिंग के अनुसार भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम बल दे रहे हैं। और जितना ज्यादा हम स्किल डेवलपमेंट पर बल देंगे, भारत के नौजवानों का सामर्थ्य विश्व में अपना डंका बजाने में कोई कमी नहीं रखेगा। और हिंदुस्तानी जहां गया है उसने अच्छाई की छाप छोड़ी है, कुछ कर गुजरने की छाप छोड़ी है। ये सामर्थ्य हमारे अंदर पहले से पड़ा हुआ है, और हमारे पहले जो लोग गए हुए उन्होंने इससे छवि भी बना के रखी हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों करीब 150 नर्सिंग कॉलेज एक साथ खोलने का निर्णय किया। पूरे दुनिया में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है नर्सिंग की। हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे बेटे
उस क्षेत्र में दुनिया में पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। पूरे विश्व की जरूरत है और ये तो मानवता का काम है जिसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। आज मेडिकल कॉलेजेस का इतना व्यापक रूप से निर्माण, देश की आवश्यकता तो पूरी करनी ही करनी है, दुनिया की आवश्यकताओं में भी योगदान दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, हर छोटी चीज पर बारीकी से ध्यान देते हुए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें भविष्य के लिए सही समय पर सही फैसले भी लेने होते हैं। हम फैसलों को टाल नहीं सकते हैं। हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भागित के भाग के अंदर अपने आप को बंधी नहीं बना सकते हैं। हमें तो देश के एस्पिरेशन के लिए हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होते हैं। आज सोलर पावर के सफल मूवमेंट्स हमारी भावी पीढ़ी के लिए एनर्जी क्राइसिस से मुक्ति की गारंटी दे रहा है। आज मिशन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में जो एनवायरमेंट की चिंता है, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, उसके समाधान का रास्ता देने का सामर्थ्य रखती है। आज हमारा सेमीकंडक्टर जिस प्रकार से जीवन चलाने में हमारे हृदय की जरूरत रहती है, वैसे ही आज हमारी टेक्नोलॉजी चिप्स के बिना चल नहीं सकती और सेमीकंडक्टर उसके लिए बहुत अनिवार्य है। उस दिशा में हम आगे जाकर के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कोई रुकावट ना आए और जीवन कहीं अटक न जाए, उसलिए एक बहुत बड़ी मात्रा में हम काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर जिले में 75 अमृत सरोवर, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बच्चे उनको कभी पानी के बिना तरसना न पड़े, इसकी चिंता हम आज कर रहे हैं। विश्व के बाजार में हमारा हर व्यापार कारोबार पहुंचे, कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक कम खर्च वाला बनाना, एफिशिएंट बनाना, उस दिशा में हम बहुत नीतियां लेकर के चल रहे हैं। आज समय की मांग है कि भारत का एक ऐसा भारत के हम निर्माण करें। नॉलेज, इनोवेशन, ये समय की मांग है और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का ये रास्ता भी है। और इसीलिए पिछले हमने समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के बढ़ावे के लिए हमने रिसर्च और इनोवेशन का एक कानून भी पारित किया है, ताकि हमारे देश के नौजवानों को इस इनोवेशन के और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देश के नौजवानों के मन में विज्ञान की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। हमें मौका गंवाना नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को हमने रिसर्च और इनोवेशन के लिए पूरे अवसर देने हैं और इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए हमने एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की नींव रखी है। आदरणीय बंधुगण, सामाजिक न्याय ये हमारी पहली शर्त है। बिना सामाजिक न्याय, बिना संतुलन, बिना समभाव, बिना समत्व हम इच्छित परिणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बन के रह गई। हमें उसको व्यापक रूप में देखना होगा। हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें, किसी समाज में दबे कुचले व्यक्ति को कोई सुविधा दें, वो तो सामाजिक न्याय की एक प्रक्रिया है। लेकिन उसके घर तक पक्की सड़क बन जाए ना, वो भी सामाजिक न्याय के लिए उसको मजबूती देती है। उसके घर के नजदीक में बच्चों के लिए अगर स्कूल खुल जाए तो वो भी उसको सामाजिक न्याय की मजबूती देती है। उसको बिना खर्च अगर आरोग्य में समय की जरूरत पड़े वो मिले, तब जाकर के सामाजिक न्याय की मजबूती मिलती है। और इसलिए जिस प्रकार से समाज व्यवस्था में सामाजिक न्याय जरूरत है, वैसा ही राष्ट्र व्यवस्था में सामाजिक न्याय की आवश्यकता है।
अब देश का कोई हिस्सा पीछे रह जाए, अविकसित रह जाए, ये भी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। दुर्भाग्य से देश का पूर्वी इलाका, भारत का पूर्वी भाग जो समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे इलाके में जाना पड़ रहा है। ये स्थिति हमें बदलनी है। हमारे देश के उस पूर्वी भाग को, इलाका को समृद्ध बना करके सामाजिक न्याय की मजबूती भी हमने देनी है। असंतुलित विकास, शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन एक उंगली को भी अगर लकवा मार गया है तो शरीर स्वस्थ नहीं माना जाता है। भारत कितना ही समृद्ध हो, लेकिन कोई अंग उसका दुर्बल रह जाए तो भारत समृद्धि में पीछे है, मानना पड़ेगा। और इसलिए हम सर्वांगीण विकास के पक्ष में, सामाजिक न्याय की उस ऊंचाई को प्राप्त करने के पक्ष में, दिशा में हमें आगे बढ़ना है। चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हमें उन चीजों को प्राप्त करना। और उसी लिए जो रणनीति कितनी सफल हुई है, 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर विशेष काम किया, नौजवान अफसरों को लगाया गया, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई। आज दुनिया उस मॉडल की चर्चा कर रही है और आज 100 डिस्ट्रिक्ट देश के कोने कोने में जो पीछे माने जाते थे उसको बोझ मान लिया गया था। आज स्थिति ये बनी है कि वो 100 डिस्ट्रिक्ट अपने अपने राज्य में लीड कर रहे हैं, राज्य की एवरेज से भी ऊपर जा रहे हैं। और इस सफलता को देख करके, सामाजिक न्याय की इस भावना को मजबूत करते हुए 100 डिस्ट्रिक्ट में से आगे बढ़ करके अब जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और मुझे विश्वास है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है, वो एक विकास का नया मॉडल बनने वाले हैं। वो एक प्रकार से देश के विकास के एक नए ऊर्जा केंद्र बनने की संभावना रखते हैं और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सांसदगण, आज विश्व की नजर भारत पर है। शीत युद्ध के समय हमारी पहचान कूटनिरपेक्ष देश के रूप में रही। उस समय की जो जरूरत थी, उसके जो लाभ होने थे, उस समय से हम गुजरे हैं। लेकिन अब भारत का स्थान कुछ और बना है और इसलिए उस समय कूटनिरपेक्ष की अवस्था आवश्यक होगी। आज हम उस नीति को लेकर के चल रहे हैं, जिस नीति को अगर हमें पहचानना है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं, दुनिया हमारे में मित्र खोज रही है। ये शायद विश्व में एक भारत ने और दूरी नहीं, हो सके उतनी निकटता, उस रास्ते पर चल करके भी हम अपने विश्व मित्र के रूप में भाव आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका लाभ आज भारत को हो रहा है। भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है और आज विश्व की ये जरूरत है। और उस आवश्यकता की पूर्ति करने का काम G20 में भारत ग्लोबल साउथ के आवाज बनकर के उभरा है। ये बीज G20 समिट में जो बीज बोया गया है, मेरे देशवासी आने वाले समय देखेंगे कि वो ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, विश्वास का ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है जिसकी साया में आने वाली पीढ़ियां सदियों तक एक गर्व के साथ अपना सीना तान करके खड़ी रहेगी। ये मुझे विश्वास है। इस G20 में एक बहुत बड़ा काम हमने किया है, बायोफ्यूल अलायंस का। हम विश्व के नेतृत्व करते रहे, दिशा दे रहे हैं और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है और जिसका नेतृत्व ये हमारा भारत कर रहा है। छोटे छोटे महाद्वीप, उनके साथ भी आर्थिक कॉरिडोर बनाने की दिशा में हमने बड़ी मजबूती के साथ कदम उठाए हैं। आदरणीय बंधुगण,
आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, आज हम यहां से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं, संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। लेकिन मैं एक आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे रक्षा के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहां बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां पर जो तपस्या हुई है, जन कल्याण के लिए संकल्प हुए हैं, इसको परिपूर्ण करने के लिए 7 दशक से भी अधिक समय से जो पुरुषार्थ हुआ है, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और नए सदन के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मेरा विनम्र निवेदन माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी से कि आप हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल स्पीकर लोक सभा श्री ओम बिरला जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, श्री पीयूष गोयल जी, लीडर ऑफ हाउस राज्य सभा, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, श्री अधीर रंजन चौधरी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोक सभा, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्य सभा, ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन राज्य सभा एंड ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अचानक होमवर्क दे दिया और प्रधानमंत्री जी के बाद बोलना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। On this momentous occasion, as we stand on the threshold of adding a new chapter to the annals of our parliamentary democracy, I congratulate you all on our phenomenal rise. We all are indeed privileged to be witnessing this history in the making as we bid adieu to this magnificent parliament building which houses both the chambers of our parliament and this imposing central hall and move to the new one. Traversing
over 7-decade journey from Svidhan Sabha to the present day in Amritkal, these hallowed precincts have witnessed many a milestone. Honorable members, from tryst with destiny at midnight of 15th August 1947 to unfolding of innovative, impactful, forward-looking GST regime at midnight of June 30, 2047, and now this significant day. In this very central hall, the members of the Constituent Assembly embarked upon the journey to accomplish the daunting task of drafting the Constitution of India. Deliberations in the Constituent Assembly in this theatre exemplified decorum and healthy debate. Contentious issues were negotiated in a spirit of consensus with scholarly debate and spirited deliberations. Honorable members, we all need to emulate the exemplary conduct of our founding fathers. The new building of Parliament, a testament to dawn of Atmanirbhar Bharat, is much beyond an architectural marvel. It is a reflection of India's rich cultural diversity, a symbol of national pride, unity, and identity. Impactfully organized G20 resulted in demonstration of India's global power. The new building of Parliament, Bharat Mandapam and Yasho Bhumi are the most recent infrastructure masterpieces competing with the best in the world. These iconic venues are set to play a pivotal role in shaping India's tomorrow. Honorable members, the world now realizes that our nation is on the rise as never before, and this rise is unstoppable. Bharat is defining global discourse, shaping their outcome, and has emerged as significant player among the Committee of Nations. Bharat is dominating as an agenda setter for global peace, climate transition, and economic development on par with other leading players. In this encouraging scenario, generating hope and optimism all around, I find it a befitting occasion to congratulate Prime Minister Narendra Modi for his sagacious approach, people-centric vision, missionary zeal, and exemplary execution. Salute and appreciate contribution of the people in all walks of life and our bureaucracy that is enjoined with execution of policies. Honorable members, time has come to give up once and for all the premise of justifying transgression of conduct and outrageous disregard of rules in the temples of democracy by making reference to past instances. As we march into the new Parliament building, we must enhance cooperation and consensual approach. Time for us to bid farewell to confrontational stance and resolve to ever keep national interest uppermost. Honorable members, it is time, right time, to bury the strategy of weaponizing disturbance and disruption in parliamentary functioning, as these are antithetical to democratic values and can never have sanction of our people who are our ultimate masters. I would like to quote Dr. B.R. Ambedkar, who in his final speech in the Constituent Assembly stated, I quote, "If we wish to maintain democracy, not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing in my judgment we must do is
to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives, unquote. Let us heed his clarion call. On this decisive moment, as we are witnessing the transformation of Bharat, appreciations to Prime Minister Narendra Modi's vision and sagacity for fructifying tryst with modernity. We had tryst with destiny in 1947. We are lucky and fortunate by efforts of the Prime Minister that we are having today tryst with modernity for over 1 billion hearts. His role in this monumental task of shaping the destiny of 1/6 of humanity would forever be etched in history. Honorable members, this historic walk to the new building of Parliament in Amrit Kal be the march to Bharat at 2047 as developed nation. Let us in togetherness make the new chambers of the Parliament the sanctorum of our temple of democracy. Jai Hind. सादर धन्यवाद मान्यवर। कार्यक्रम के समापन से पूर्व आप सभी से अनुरोध कि राष्ट्रगीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आजादी के अमृत काल में आइए नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ अब कदम बढ़ाएं नव निर्माण की ओर। गणपति गजानन का आशीर्वाद लें, प्रस्थान करें संसद के नए भवन की ओर, जो भव्य है, विशाल है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है, नए भारत का जीवंत स्वरूप है, जहां नूतन है और पुरातन भी, जहां कारीगरी है और तकनीक भी। चलिए कदम बढ़ाएं भारत की संसद के नए भवन की ओर और नए लक्ष्यों के साथ रचें नया इतिहास। जय हिंद, जय भारत। Have it. Send a hello to me on WhatsApp. I don't have a number. So that, of course, concludes this ceremony that was held in the Central Hall of Parliament, where the Prime Minister, of course, paid his tributes to the figures who have shaped the history of the old Parliament building right from inception to the time that the parliamentarians today will, of course, inaugurate proceedings in the new Parliament building, where the session will continue tomorrow and some crucial legislations will be passed. But that was a very important speech that was delivered by the Prime Minister himself, who in a parting gesture did in fact say that one should not be referring to this building as the old Parliament building anymore, that it should be called the Samvidhan Bhavan, as a note to the Constitution of India, where all the contributions of some of India's leading parliamentarians from the past can be celebrated in this monument. So that was, of course, what the Prime Minister said in that speech that he delivered. Also, the Vice President of India, Mr. Jagdeep Dhankar,
claiming that the new parliament building should now set a precedent for disciplined parliamentary behavior, that any acrimonious exchanges between the treasury benches as well as the opposition should be consigned to history, and that the new parliament building should herald a new beginning in terms of parliamentary decorum. That was the takeaway from Jagdeep Dhankar's speech. So that was, of course, some of the last glimpses that you'll probably see of any proceedings in the central hall of Parliament, and glimpses of the old Parliament building, which will now be renamed as Sansad Bhavan. That was, of course, the request that the Prime Minister of India made. Let's, in fact, go back to the proceedings that Doordarshan is now bringing to us. नई दृष्टि के साथ संसद भवन की नई इमारत की तरफ रुख किया जाएगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हुए ये भवन, जिसे अब संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा, इसे संरक्षित रूप में रखा जाएगा और अब एक समृद्ध इतिहास के रूप में दर्ज ये इमारत एक नए दृष्टि, एक नई सोच, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है, इसकी जो सोच है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के एक सपने के साथ, इस संकल्प के साथ पुराने संसद भवन को अलविदा कहते हुए अब नए भवन की तरफ हम रवाना हो रहे हैं, चल रहे हैं। बिल्कुल अग्रसर हो चले हैं नए संकल्पों, नई उम्मीदों, नई आशाओं, नए विश्वास और नए प्रतिमानों को गढ़ने के लिए संसद के नए भवन की ओर माननीय सांसदगण, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष सभी अब धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं उस ओर जहां से वो विकसित भारत की एक नई गाथा लिखेंगे। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया गया केंद्रीय कक्ष में, उसकी शुरुआत जो है, उसकी यात्रा जो है संसद के नए भवन से होगी। और ये भवन जो आपके सामने 1927 से 2023 तक हिंदुस्तान की गौरव गाथा का प्रतीक रहा। 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने किया था इस संसद भवन का उद्घाटन और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 13 मई 1952 को दोनों सदनों की पहली बैठक हुई। लेकिन अब इतिहास के पन्नों में ये तारीखें दर्ज और इसके बाद आगाज एक नई यात्रा का, आधुनिकता उठा हुआ कदम, परंपरा जमा हुआ पैर। और इसके पीछे का जो सूक्ष्म विचार है, उठा हुआ पैर तभी उठ सकता है जब एक पैर जमा हुआ हो। और यही बात प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी कही। Well, here's a report that's been sent in from my colleague Pragya, who will now explain to us about the transition from the old Parliament building to the new Parliament building and what the members of Parliament will now be doing now that this particular ceremony in the old building has concluded. The address and the event that was happening in Central Hall has just finished. Prime Minister has urged Chairman and Speaker that this old Parliament building should not be named Old Parliament Building. In fact, there should be another name which is called Samvidhan Sabha. Prime Minister said because the Constitution was made in this building, we need to keep up the stature of this building, and that is why we need to, name it as Samvidhan Sabha. A very nice proposal that was received well by everyone in the House. All the MPs applauded when Prime Minister mentioned that. And if we can tell you about the proceedings that are going to happen right now, Prime Minister would be coming from that side. There's a corridor being built from here to Makadwar. There is Makadwar of the new Parliament building where Prime Minister along with all MPs will be going. This is huge remarkable thing that there is a transition from the old building to the new building, and it has been also
captured beautifully. There are events lined up for that as well. All the MPs, if you could just see, they have gathered here at gate number 1 as well. But Prime Minister would be walking through this corridor only. The security arrangements are in fact in place. There's a very tight security. Prime Minister would be walking in, entering through the Makar Dwar. Satyamev Jayate is what has been written on the Makar Dwar as well. Prime Minister would be entering through that, and this will be the official entering of Prime Minister in the launch of the new Parliament building. So today on there will be a sitting. All the MPs will be given kit. They have been given a copy of the Constitution as well. Would be given to understand that Prime Minister too can carry a copy of the Constitution. Whether he does so or not is yet to be seen. But it's a huge moment in the history where as Prime Minister described this is a building, not just a building, but it is a building for the aspirational India. The aspirations are all-time high, as Prime Minister put it, and they are going with a lot of hope, thinking that India will become soon Vishwa Guru and also Vishwa Mandir. This is Pragya Kaushik for Times Now. Well, we also have Shivani as well as Akanksha tracking all these developments. We'll come back to them in just a short while, but for the time being, we'll slip into a short break. We'll come back with more on the other side. Stay tuned. When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9, weeknights at 9, only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries to watch out? Because your voice must be heard, your questions answered above all else. Frankly Speaking with Navika Kumar. Can I have your attention please? क्या आप दिन की सही शुरुआत ढूंढ रहे हैं? I believe in an action-packed, fast-paced, agenda-setting start to the day. खबर सिर्फ दिखाना नहीं, असर होना भी जरूरी है. I'm Amita Wadhwa. I'm Pratibha. मैं हूँ शिवरा मल्होत्रा and you're watching the Morning News Hour. Whenever news breaks, you will see us. Process it, analyze it, and broadcast it. After the spot reporters, we are the first responders. We are at the front line of every news event. We are situation analysts, raw, live, and unedited. Pure news, pure passion. Times Now, action begins here. When news is troubling. They rented this house right here and 3 days later she was murdered. When news is for common man. We are asking you for the Aam Aadmi that why the proper checks and balances were not done, sir. When news is for nation. Right now I'm just few meters away from Pakistani post which is acting as launch pads for terrorists. When news is exclusive.
We are reporting from few miles away from the line of factual control. We report from ground zero. Times now. Action begins here. Explosive, exclusive, and beyond. The show that gets you the inside track. A deep dive into stories that matter. Raising questions you won't ask. Your voice is now our voice. Watch Blueprint with me, Meghna, And Pranesh. at 6:30 p.m. every weekday. Only on Times Now. When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The news hour at 9. संसद भवन के पुराने परिसर से बाहर निकलते हुए और उनके साथ तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद गण, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें भी अपने आप में ऐतिहासिक हैं क्योंकि ये कदम बढ़ रहे हैं संसद के नए भवन की ओर और इतिहास गढ़ने के लिए भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाते हुए संसद के नए भवन की ओर अग्रसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और तमाम सांसद उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, सब साथ में। प्रीति, ये भी जो तस्वीरें हैं वो ऐतिहासिक हैं क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि पुराना घर छोड़ के जब हम निकलते हैं तो यादों का एक बस्ता समेट कर निकलते हैं। कहीं ना कहीं एक भावना जो होती है, भाव होता है, उसे छोड़ने का जो एक दुख होता है, लेकिन चूंकि नए संकल्प है, नई यात्रा है, उसको तय करना है तो उसकी भी एक खुशी है, तो ये एक सम्मिश्रण हो जाता है। और ये तस्वीरें देखिए आप संसद भवन परिसर से एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए भी, मिलते हुए, बातचीत करते हुए, नई उम्मीदों और नए संकल्पों के साथ ये देखिए संसद के पुराने भवन से प्रस्थान नए भवन की ओर। 75 साल की जो गाथा है उस पर एक तरह से विराम है और अब नए संसद भवन की तरफ ये प्रस्थान किया जा रहा है और पुराने संसद भवन से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मंत्रियों और सांसदों के साथ नए संसद भवन की तरफ रवाना हो गए हैं। अब जिस तरह से इस विशेष सत्र की शुरुआत के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, जब उन्होंने अपना संबोधन भी दिया, जब हम 75 सालों की यात्रा पर बात कर रहे थे, संविधान सभा से लेकर जो 75 साल का संसदीय सफर रहा है, इसके बारे में चर्चा के वक्त प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही कि कई मायनों में ये सत्र ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा इतिहास आज लिख दिया गया है। पुराने भवन को अलविदा कहकर नए भवन की तरफ प्रस्थान। बिल्कुल, आज देश के लिए संसद के नए भवन का अवतरण गौरव से भरा हुआ है। कहा भी जाता है कि आज का बोया हुआ कल दिखता है और ऐसी ही आज की जो चुनौतियां हैं वो आने वाले अवसरों में बदल जाती हैं। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि चुनौतियों को अवसरों में बदलें और ऐसे अवसर भी अगर आत्मसात किए जाएं तो किसी बड़े बदलाव की जमीन बन जाते हैं। कई बार अतीत जो है वो सामने खड़ा होता है लेकिन वो भविष्य के लिए राह भी दिखाता है और ये सुखद संयोग है। नए भवन में देश के तमाम प्रतीक रोशन हुए हैं और प्रीति, नए भवन की अगर हम बात करें, जो संसद का नया भवन है वो अपने आप में बेहद अनूठा है क्योंकि नवीनता और प्राचीनता का संगम है। वहां पर अगर आपको एक तरफ आधुनिक टेक्नोलॉजी, तकनीक, डिजिटलीकरण दिखाई देगा तो वहीं प्राचीन भारत की समृद्ध परंपरा, संस्कृति, विरासत की खूबसूरत नक्काशी चित्र भी आपको वहां पर दिखाई देंगे। भारत
का जो गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीय लोकतंत्र का, वो वहां पर दिखाई देगा। और तस्वीरों में देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें ये आ रही हैं कि जो लोग वहां से निकले हैं, हमारे माननीय सांसद, चूंकि आवाज तो हम नहीं सुन पा रहे हैं प्रीति, लेकिन शायद कुछ नारेबाजी करते हुए, शायद भारत मां के जयकारे लगाते हुए, या शायद जो भारतीय संसद है उसका जयकार करते हुए, मैं अपने पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी अगर हम वहां की आवाज भी हम तक अगर आ पाए कि जो सांसदगण हैं जो अपने हाथ उठा के नारेबाजी कर रहे हैं, दरअसल वो अपने मुख से इस वक्त संसद भवन में जाते वक्त क्या कुछ बोल रहे हैं। उमंग जो है सांसदों की, उसे भी कहीं ना कहीं बयां कर रहा है, जो हम इस समय देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं लीड करते हुए सभी को, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम सांसद उनके साथ मौजूद हैं और संसद के पुराने भवन से नए भवन की ओर प्रस्थान करता हुआ ये दृश्य अपने आप में ऐतिहासिक, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, विकसित भारत के संकल्प को मन में लेकर ये तमाम सांसद आज प्रस्थान कर रहे हैं संसद के नए भवन की ओर। बिल्कुल, भारत की संसद की ये तस्वीरें अनमोल हैं। एक तरफ जहां 100 बरस से ज्यादा पुरानी विरासत खड़ी है जो गुलामी से आजादी तक के सफर की गवाह है, तो दूसरी तरफ आधुनिकता की मिसाल, बुलंद इमारत इंतजार कर रही है। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख भी सकते हैं। एक तरफ हमारा इतिहास, हमारा अतीत, हमारा गौरव, और दूसरी तरफ आधुनिकता की ये बड़ी इमारत जो कि भविष्य के सपने को बुनने के लिए तैयार, विकसित भारत बनाने के संकल्पों के साथ, मजबूत और चट्टान जैसे इरादों के साथ खड़ी संसद भवन की नई इमारत, जो अपने आप में विविधता का संगम है, जो भारत की अनेकता है उसको एकता के सूत्र में पिरोए हुए भारत का नया संसद भवन। और ये देखिए कुछ सांसद अपने मोबाइल से सेल्फी लेते हुए संसद के नए भवन के सामने जाते हुए, क्योंकि ये पहला दिन है और ये ऐतिहासिक है। इस मोमेंट को हर कोई अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है और सेल्फी जो है अपने आप में एक बहुत ही पर्सनल चीज हो जाती है प्रीति, क्योंकि हमने देखा कि एक हमारे माननीय सांसद अपने मोबाइल से ये फोटो खींच रहे थे संसद के नए भवन के सामने, उसमें प्रवेश करने से पहले, और उसके बाद इसको साझा भी करेंगे कि संसद भवन में प्रवेश करने का पहला दिन इस चित्र के माध्यम से। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं, इस तस्वीरों में जो अभी कुछ ही पलों पहले हमें दिख रही थी, दोनों ही भवन कैद हैं। एक तरफ इतिहास तो दूसरी तरफ हमारा आधुनिक आत्मनिर्भर भारत की झलक देता नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लीड करते हुए वो पैदल निकले पुराने संसद भवन से और नए संसद भवन की तरफ तमाम सांसदों का जो काफिला है उसे लीड करते हुए वो आगे की तरफ लेकर गए हैं। और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं महिला सांसद, अलग अलग दलों के और सांसद जो इस समय नए संसद भवन की तरफ रवाना हो रहे हैं और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन रहे हैं। 17वीं लोकसभा और साथ ही जो राज्यसभा के मौजूदा सदस्य हैं वो सभी मौजूद हैं और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। तो आज संसद का नया भवन, इस विशेष सत्र में इसी नए भवन से कार्रवाई की शुरुआत। पुराना संसद भवन और नया संसद भवन दोनों एक समय एक साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं। पुराने संसद भवन को अब संविधान सभा के नाम से जाना जाएगा, इसे संरक्षित रखा जाएगा और अब जो संसद की कार्यवाही है उसकी शुरुआत आज से नए संसद भवन में शुरू हो रही है। नया संसद भवन जो कई विशेषताओं के साथ उत्कृष्ट कलाकृतियों का समागम है, आज कार्यवाही के लिए भी वो समर्पित हो गया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कक्ष में जब संबोधन दिया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लाल किले की प्राचीर से मैंने कहा था कि यही समय है और सही समय है। देश जिस दिशा में चल पड़ा है उसके हिसाब से इच्छित परिणाम मिलने वाले हैं। हम जितनी तेज गति से काम करेंगे उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संसद के केंद्रीय कक्ष से अभी जो संकल्प लिया गया
कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बनाना है, तो ये जो बड़े संकल्प हैं, इन बड़े संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक हमारी सोच का कैनवास बड़ा नहीं होगा, हम बड़ा कैसे सोच सकते हैं। तो उस कैनवास को बड़ा करने की जरूरत है। और ये देखिए तस्वीर में प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ राजनाथ सिंह कुछ मंत्रणा करते हुए, कुछ बातें करते हुए नए संसद भवन की ओर प्रस्थान करते हुए। ये तस्वीरें कुछ पल पहले की है जब प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं तमाम सांसदों को और नए भवन की तरफ अलग अलग दल के राज्यसभा और लोकसभा के ये सांसद अब एक नई इबारत, विकास की एक नई कहानी लिखने के लिए संसद के नए भवन की तरफ रवाना हो चुके हैं। 4000 से ज्यादा कानून हमने पुराने भवन में बनते देखे। तमाम कुछ बेहतरीन अनुभव भी हैं, अच्छे अनुभव भी हैं, तो कुछ खट्टी यादें भी हैं, जिन्हें लेकर आज ये तमाम सांसद नए भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। तस्वीरों में हम यहां देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो महिला सांसद है वो भी मौजूद है और हर सांसद में एक भावुकता का पल तो है ही, साथ ही एक नया उमंग और नई उत्साह भी है जिसके साथ ये नए भवन की ओर रवाना हो गए। So in the meantime, as those pictures that are coming in, leaders that are now marching on foot to the new Parliament building, let's quickly take a look at a ground report that has been filed by Madhav Das. The procession that you can see from the gate 5 of the Parliament, the Prime Minister leading this particular procession along with, in fact, top leaders. There is Amit Shah, there is Rajnath Singh, Nitin Gadkari, as well as Prahlad Joshi and JP Nadda who are walking with him. You can see from the gate 5 of the old Parliament building onwards, and you can see, of course, the red felt lining that has been given to this entire walkway, and there will enter over here at the Makar Dwar of the new Parliament building. That's where the entry is going to happen. You can see the procession of the Parliament where the Prime Minister is leading the way with the MPs following him is currently underway. This is the procession the Prime Minister is leading of all his ministers and of course also his members of Parliament where in fact he will be going into the new Parliament building. You can see the Prime Minister walking over there leading this entire way. Of course, the old Parliament building, he has suggested to the Speaker as well as the chairperson of the Rajya Sabha, that is the Vice President, that we call the Constitution House. The old Parliament building being called the old Constitution House now, and the new Parliament building, of course, will be for serving as the Parliament of India. That is the historic moment that we are seeing, literally history being made before us as in fact the MPs walk in for the first day, for the first session of the new Parliament building. Even as we speak, of course, a lot of work that has gone into the construction of this Parliament building, and although there have been some amount of delays, the fact is that a new Parliament for India that is being created before us as the MPs and the Prime Minister walk in to the new Parliament building that is right behind us. That is in fact a history being made even as we see right before us at the new Parliament building complex. और इस बिल्डिंग को So very, very important moment indeed for Indian democracy. The Prime Minister, of course, talking about and other leaders as well about the role that the old Parliament building has served. As you can see behind me, the procession that is now arrived at the new Parliament building, where in fact this will be the place where the all important and historic women's reservation bill is to be tabled today. It will be taken up in the Lok Sabha tomorrow. That is in fact on Wednesday, and on Thursday it's expected to become a law in the Rajya Sabha when it is passed, and thereby becoming one of the most historic and important bills that is in fact being tabled in this particular Parliament. As you can see, the number of MPs who are in fact following the Prime Minister continue to flow from this part of the Parliament of the old building where the gate number 5 from where they have all emerged, and all of them walking in one line, walking in unison towards the new Parliament building, where in fact they will in fact be sitting from here on, and which will of course play a very, very important role in the functioning of Indian democracy, in the functioning of our Parliament, and in fact all debates, all laws that are going to be passed over here will be something that impacts on the lives of all 150 crore Indians. So a historic moment indeed that we are seeing take place right before us even as we speak. Madhav Gopalakrishnan reporting. Formal entry has now happened. As they are making their way to the new Parliament building, they have now entered the new Parliament complex. And Shivani and Akansha both joining us live, because Shivani, we are right now witnessing a moment in history. This is history in making as far as each and every step that has now been taken by those leaders towards the new Parliament building. Many of them have already entered
the new parliament building already. This is history in making as those pictures are coming in live from the new address of the new parliament building, Shivani. Certainly, history is made, and this is the new beginning of a new India when the temple of democracy, that is the constitution, gets a new house, a new face, a new heritage, and a new building, the new parliament, where we have seen how Prime Minister has led the march, and the MPs have already entered this new parliament building. And this is a momentous occasion on the occasion of Ganesh Chaturthi, Ganesh, the Lord of New Beginnings. And we also saw how in the central hall of the old parliament and all began with remembering Lord Ganesh, and thereafter all the addresses where Prime Minister Narendra Modi has once again called for a consensual contribution by all the members of the parliament, all the opposition parties, to make India a new India, Atmanirbhar India, India which sets an example in the world to become a perfect model of Atmanirbharta. And now when the entry to the new parliament has already been done, now the proceedings will take place, as we've been telling our viewers that at 1:15 the first sitting of the Lok Sabha from the new parliament will take place, and then the addresses, the discussions will begin about this particular bill and all the other bills that are staged for discussion. Of course, many of them that are scheduled to be tabled and talked and discussed about, of course, we'll come to that. But in about 10 minutes from now, Akansha, it's already 1:04 p.m. this afternoon, and it is seamless, the kind of transition that seems to be happening now as the MPs are now making their way inside the new parliament complex. It's a short walk, really, if you look upon, the distance really that they had to cover from the old parliament building to the new one. Well, absolutely. And Indian Parliament now has a new address, from last photo to last speech to the historic walk from the old Parliament building to the new Parliament building that we just witnessed was history in the making. And you will see September 19, 2023 in the history books also. And we heard Prime Minister Narendra Modi speak in the old building, saying that it is a very emotional moment for him. He also spoke about the historical legacy of the Parliament, going on to say that there's peace in Jammu and Kashmir, and also the Muslim sisters and mothers they've got justice because of this parliament. And he said that this marks the beginning of a new journey, and also said that this is a move towards a resolve towards developed India, a vision of the government to achieve by 2047. So in his address he spoke about the historical legacy. But since morning we've been noticing, firstly there was a historical last picture in the old parliament, then after that we saw the special program that was also the last address of Prime Minister, of the other top leaders in the old parliament building. And after we saw how Prime Minister with folded hand walked out of the building, and he was joined by other top leaders of the Bharatiya Janata Party, and behind them were host of MPs, and they entered the new parliament building. And this definitely marks a beginning of a new slogans that have been raised by the MPs as they are making their way in the new parliament complex. And Shivani, this time would be also a time that many first things that will be happening for the first time rather, and especially when it comes to the Prime Minister's address, when it comes to both of the houses as they will be convening today, only being the second day of this special session, but a momentous occasion being the first day of the Lok Sabha that will convene in about 10 minutes from now. Amita, certainly we've seen a lot of things happening for the last time in the central hall of the old parliament, and we'll see a lot of things happening for the first time in the new building of the parliament. A new beginning indeed, with the pattern of the entry, the pattern of the house and the sitting. Everything would be new. The constitution copies to be given to the members of the parliament as they are entering the new parliament building before the sitting commences in some time from now. And certainly from attendance to the uniform of the people on guard in this particular new parliament building, everything is new, the structure is new, and that's why the perception and the kind of work we need to do should be new. That's what is the appeal of the Prime Minister when he spoke in the central hall for the last time. And he also has said that world needs more skillful youth from India. World needs a better example from India. We can do much better, and when we are entering
this new parliament building, we need to work together. We need to work in a positive manner to make India a better country, a developed country, an Atmanirbhar country, a self-reliant and a powerful country that is an example for the world. So in some time from now, the Lok Sabha will preserve phenomenal rise that has now been witnessed, and of course this is adding a new chapter to our parliamentary democracy as the leaders, including the Prime Minister who's leading the Member of Parliament to the new building. Madhav has sent us another report there as far as this historic moment that is being witnessed by one and all. In fact, entering from the Makar Dwar of Parliament, you can see there that Rahul Gandhi as well as Adhir Ranjan Chaudhary, other leaders of the Congress party, who are now entering through the Makar Dwar of the new Parliament building, and that process currently underway. We saw a short while earlier the Prime Minister along with his members of Parliament of the BJP entering through this particular Makar Dwar as well, and that process currently underway that we see. Of course, the Lok Sabha will be sitting first at 1:15. It's at 2 o'clock that we'll be seeing the Rajya Sabha sitting as well. So all in all, a very important day, the first day of sittings beginning at the new Parliament complex where we're currently at, and of course a very, very important day for parliamentary democracy, as it were, but it's physically shifting from the old Parliament building this side right across to the new Parliament building within the same complex. Members of Parliament being the same complex there as the parliamentarians are now making their way, and of course we'll be getting the first pictures from inside the new Parliament complex as well. Satyamev Jayate adorned, as you can see in the door or this gate that is specifically which faces the old Parliament building as they are making their way to the new one. Lok Sabha Speaker Om Birla, you can see them, many of them of course spoke in their last address at the Central Hall, and how it was a historic session, so to say, as far as many of those speakers also talked about our rich culture and the reforms that have been made, and especially when it comes to the Indian aspirations, that should be the priority. And very important message that came in from the Prime Minister himself, saying that if anyone can make a big picture on a small canvas, just we cannot do that. In the same way, we cannot enlarge the canvas of our thinking. We will not be able to paint a picture of a grand India. And this is the message that has gone across from the Prime Minister, especially saying that all of the laws that have been made, all of the discussions, all the debates that has happened in the Parliament must now be aimed at focusing and encouraging the Indian aspirations. So shortly, we are expected to get the inside pictures from the new Parliament building itself, and in about it's 1:09 p.m. right now, Shivani. We're just waiting for the time when we get those inside pictures and the Lok Sabha, the first session of the Lok Sabha convenes. Amita, just in minutes from now, we will see pictures from the new Parliament, because we've already seen the pictures how the Prime Minister and all the MPs have entered the new Parliament, leaving the old Parliament, and this is for the new beginning. And as we have been telling our viewers that the first sitting in the new Parliament building will start at 1:15 in the Lok Sabha. So we shall be getting some pictures of this new beginning, and also we are expecting one more time address from the members, what's going to happen, how it's all going to begin, and how these MPs are going to start their first day, first sitting in the new Parliament building of India. And also a suggestion was made by the Prime Minister to call this building Samvidhan Sadan. So this is also a big indication on the name of the new Parliament building after its inauguration, and now the shifting from the old Parliament to the new Parliament. So a lot of new pictures, new news, new updates await us, Amita, and in minutes from now, the first session will start from the new Parliament building, and a lot of historical decision of what the Prime Minister have been indicating and talking about will happen from this new Parliament building in just minutes from now. And even, when the Sengal was going to be put in its place, that moment was also a historic one. But Akansha, back in time, we thought that even when it comes to the monsoon session, that will be held in the new Parliament building. But that did not happen. Today, we are witnessing this historic moment because a special session of Parliament that has been called. And the very reason that was cited by the government, saying that even when it comes to the legacy, the learnings, all of the remembrance, that needs to be done in this current session of Parliament. Of course, we are also expecting that big developments are also possibly could be taken up. There are still 3 to 4 more days left for this historic special session. But this is something, as far as the Lok Sabha convening is concerned, that's going to happen in minutes from now. But all the more importance that it also holds, Akansha, in a short while from now when we will get those inside pictures.
Well, absolutely, and it is very important to mention the day that the government has chosen to for this transition. Today is Ganesh Chaturthi, which in itself symbolizes the mark of a new beginning, and that is why this day was chosen to transfer the part from the old parliament to the new parliament. And since morning, we've been pictures are in now, Akansha, as I was just saying, and we were hoping that we'll get them any minute now. Those pictures from inside the new parliament building, and with an applause as Prime Minister Narendra Modi is being welcomed and by the parliamentarians, because everything now around them is brand new. Brand new with the facilities, brand new. Naya Sansad is what is now being called as the Prime Minister is now making his way to this designated seat, the treasury benches. Let's dip into the live audio that is now coming in from the Lok Sabha. Well, this is how the new Lok Sabha looks. This is the picture that is now coming in from the new Lok Sabha, from the Naya Sansad, as the Prime Minister made his way inside the Lok Sabha. 1:15 is the time as the special session, the second day of the special session that will convene. Prime Minister Narendra Modi and all the leaders and ministers who are now sitting in the treasury benches, as we also will catch a glimpse of the entire Lok Sabha. There you can see. This is how the positioning now is, and you can see there is a lot of space there. And of course, even when it comes to the MPs, as the Prime Minister himself seems to be admiring the work that is now being done inside the new Parliament building, because it is important to note that how he himself was invested right from the very beginning when the announcement was made that a new Parliament building that will be constructed. And of course, when it comes to taking selfies, Rahul Gandhi there outside, and even when it comes to the Constitution of India, as you can see in the hands of Adhir Ranjan Chaudhary, those are many of those leaders from the opposition, as now they seem to be entering the new Parliament building, and this is a copy that has been shared to all of those parliamentarians, and a special kit that has been made for them, including a copy of Constitution, a special coin, a postage stamp, a commemorative coin that is being called to mark the special occasion. And there you can see the view, and the view is so very different from the old Sansad and now to the new Sansad, that they've made this seamless transition to the new Lok Sabha, as we are awaiting those inside pictures and how the entire session that will now commence in about a minute or so. Prime Minister Narendra Modi seated to his right, Raksha Mantri Rajnath Singh, Union Home Minister Amit Shah also there present, and as far as Om Birla now will be taking his chair as the Speaker of the Lok Sabha, and it would be right next to him when the Singol, we have seen those pictures that came in, the Singol, the Sthapna jo kari gayi thi Singol ki, that would be placed right next to the Speaker of the House of the Lok Sabha, Om Birla. And pictures that are now coming in from inside, and of course, even when it comes to the accomplishments that India has made, this is something that has been highlighted by Prime Minister Narendra Modi. And even when it comes to leaving and bidding adieu to the old building, that was an emotional moment for all of them. Well, Shivani, inside pictures coming in, it is breathtaking. Just taking a look at all of those pictures that are coming in from different camera angles, this is Bharat's Naya Sansad. Amita, see, during COVID, when the world stopped, this is what India was doing, and we all as Indians are witnessing change, witnessing transforming India, and how this shift from the old Parliament building to the new Parliament building is now happening. And in minutes from now, the first sitting in the new Parliament will begin for a new beginning that has been called for by the Prime Minister, and historical decisions will be taken. There will be new bills on the table, and all the working will begin in a new format, from the attendance with the digital cards to the work schedule, and a lot of things will be new. And the mesmerizing beauty of this new Sansad that we can all see and witness is there to admire for the parliamentarians. In fact, for the first day when they are sitting there, it is a transitional phase. It will certainly overwhelm them. And a while back when we were talking, there were a lot of speculations that there can be movement from old to the new building in the monsoon session. But I think there was that this couldn't have
have been so special, and that's why this special session of the parliament was required for this transition from the old to the new parliament, and that's what we are seeing. So it's just a 5-day session, but a big session, a remarkable session. A history is being created, not just by the movement from the old to new, but a change, a transition is sparked by the Prime Minister in the thinking, in the pattern of work, in the concepts and how the style of working would be for the parliamentarians to make India future ready, to make India Atmanirbhar, to make India a totally different country in the world by 2047. That's what the pledge was done. आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें संसद के पुराने और नए दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन का अवसर मिला। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम सबके लिए शुभ दिन है। मैं सभी को भी गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम अपने देश के उन संस्थापकों, राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके संघर्ष एवं बलिदान के कारण हमें आजादी मिली। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो जनता की को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों की प्रगति को सुनिश्चित करता है। माननीय सदस्यगण, जो हमारी श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं, परिपाटियां और अनुभव हैं, हम इस नए भवन में उन श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे अच्छे अनुभव रहे उनको आगे बढ़ाएंगे, और जो हमारे अच्छे अनुभव नहीं रहे उन अनुभवों को त्याग करेंगे। ये हम संसद की उच्च मर्यादा, प्रतिष्ठा कायम करें। हम नए भवन में नए विचारों के साथ लोकतंत्र की संस्कृति को, चर्चा संवाद की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करें। हम सदन में शालीनता और मर्यादा से अपने विचारों को रखें। सहमति असहमति लोकतंत्र का मूल मंत्र है, किंतु हम उसे गरिमा के साथ व्यक्त करें, मुद्दों पर चर्चा करें। हमारा यह सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने देश हित में एक साथ मिलकर बड़े फैसले लिए हैं। मुझे आशा है इस सदन में भी हम उसी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि नए भवन में हम एक ऐसे प्रतिमान स्थापित करें जिससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और मजबूत हो। आज हमारे सदन की गतिविधियों को सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीक के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। इसलिए हम इस नए भवन में देश की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के विश्वास और भरोसे को जीतने का प्रयास करें। उनके मुद्दे, उनकी आकांक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ मर्यादित तरीके से सदन में रखें। माननीय सदस्यगण, सदन के सुचारू संचालन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा है। मुझे आशा है नए संसद भवन में भी, इस कक्ष में भी अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को लागू करते हुए आप मुझे सहयोग करेंगे और सदन को सुव्यवस्थित नियमों प्रक्रियाओं से चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। हमारा यह भवन हमारी विरासत, विविधता और आधुनिकता का भव्य संगम है। निकट समय में इस भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं भवन के निर्माण में
योगदान के लिए भारत सरकार, लोकसभा सचिवालय और श्रमवीर कर्मयोगियों को भी इस हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए सपने के साथ संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सदन को संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन का ये प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। सुखद संयोग है कि ये गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता है। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है। इस पावन दिवस पर हमारा ये शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। आजादी के अमृतकाल में हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं, तब अब जब गणेश चतुर्थी का पर्व आज है, तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्तावित करके पूरे राष्ट्र में सुराज्य की आह्लेख जगाने का माध्यम बनाया था। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पर्व से सुराज्य की
संकल्पना को शक्ति दी, उसी प्रकार से आज ये गणेश चतुर्थी का पर्व लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत स्वराज्य की बात कही थी। आज हम समृद्ध भारत गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर उसकी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी देशवासियों को इस अवसर पर फिर एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामि दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामि दुक्कड़म। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भवन नया है, यहां सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नहीं है। यहां तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंग रूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है, लेकिन यहां पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है और वो आजादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है, जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है। वो हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है, तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ सेंगोल
हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र चेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वो आज हम सब की प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है। और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था, और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था। लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूँगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, हृदय से, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। और 30,000 से ज्यादा श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए, और कई पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन श्रमयोगियों का नमन तो करता ही हूं, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है, जिस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों के पूरा परिचय इसमें रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर के इस भव्य इमारत को, यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है, और हम सब के लिए गर्व की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा जाता है, यत् भावो तद् भवति, और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है। यद् भावो तद् भवति, और इसलिए हम जैसी भावना करते हैं, और हम जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है भावना भीतर जो होगी, हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे, और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है। ये संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया। नए भवन में हम सभी अपने वाणी से, विचार से, आचार से संविधान के जो स्पिरिट है, उन मानदंडों को लेकर के
नए संकल्पों के अनुसार नई भाव को लेकर के, नई भावना को लेकर के मैं आशा करता हूं। अध्यक्ष जी, आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, कभी स्पष्ट कह रहे थे, कभी थोड़ा लपेट कर भी कह रहे थे। हम सांसदों के व्यवहार के संबंध में मैं मेरी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता के नाते हम सभी सांसद आपकी आशा अपेक्षा में खरे उतरें, हम अनुशासन का पालन करें। देश हमें देखता है, आप जैसा दिशा निर्देश करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव तो दूर है और जितना समय हमारे पास बचा है इस पार्लियामेंट के, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां वेदों में कहा गया है, सम्यच्चः सब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, अर्थात हम सब एक मत होकर, एक समान संकल्प लेकर कल्याणकारी सार्थक संवाद करें। यहां हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं और इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करता रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसद ने राष्ट्रहित के तमाम बड़े अवसरों पर ही इसी भावना से काम किया है। न कोई इधर का है न उधर का है, सब कोई राष्ट्र के लिए करते रहे। मुझे आशा है कि इस नई शुरुआत के साथ इस संवादीय के वातावरण में और इस संसद के पूरे डिबेट में हम उस भावना को जितनी ज्यादा मजबूत करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य हम प्रेरणा देंगे। संसदीय परंपराओं की जो लक्ष्मण रेखा है, उन लक्ष्मण रेखा का पालन हम सबको करना चाहिए और वो स्पीकर महोदय की अपेक्षा को हमें जरूर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में राजनीति, नीति और शक्ति का इस्तेमाल ये समाज में प्रभावी बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है और इसलिए स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हर क्षेत्र में दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। G20 की अध्यक्षता विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा आज दुनिया इसका स्वागत कर रही है, स्वीकार कर रही है। दुनिया समझ रही है
कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात इनफ नहीं है। हमें मानव जाति की विकास यात्रा में उस नए पड़ाव को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र के विकास यात्रा में हमने नई मंजिलों को पाना है, तो ये आवश्यक है कि विमेन लेड डेवलपमेंट को हम बल दें और G20 में भारत की इस बात को विश्व ने स्वीकार किया है। महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना ने महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं। आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जनधन योजना शुरू की। 50 करोड़ लाभार्थियों में से भी अधिकतम महिला बैंक अकाउंट के धारक बनी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन भी है, नया विश्वास देता है। जब मुद्रा योजना रखी, ये देश गर्व कर सकता है कि उसमें बिना बैंक गारंटी 10 लाख रुपए की लोन देने की योजना और उसका लाभ पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने उठाया। महिला एंटरप्रेन्योर का एक पूरा वातावरण देश में नजर आया। पीएम आवास योजना, पक्के घर, ये भी उसकी रजिस्ट्री ज्यादातर महिलाओं के नाम हुई, महिलाओं का मालिकाना हक बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर देश की विकास यात्रा में ऐसे माइलस्टोन आते हैं जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने नया इतिहास रचा है। ऐसे कुल पल जीवन में प्राप्त होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल, आज का ये दिवस, संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो, उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। हम सब के लिए पल गर्व की पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में
महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में, उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें। इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं, और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर, सर्वप्रथम
हमारे लोकसभा की स्पीकर, हमारे अभिभावक, आपको सबकी तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आप ये नए सदन में आज नया शुरुआत करने का पहल किए हैं और इसके साथ साथ हमारी देश के हर नागरिकों को गणेश चतुर्थी की बधाई भी देना चाहते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष हम सब मिलकर देश को आगे ले जाएंगे। Coming in, women's reservation bill has now been announced by the Prime Minister very shortly. We expect it to be tabled by the Law Minister as well. Let me go across to Madhav. Madhav, you're on Times Now. We've managed to access the copy of the women reservation bill. Can you tell us the details? Well, it is about 1/3 seats that will be reserved for women is what the bill says. It has specific categories for assemblies, in fact, even specifically for the National Capital Territory of Delhi as well as other state assemblies and of course Lok Sabha as well. It talks about 1/3 seats being filled by direct elections. The reservation is made for the state and Lok Sabha assemblies as well, and state assemblies as well as Lok Sabha. And the bill is to come into effect after delimitation, which as we all know is scheduled for 2026. The rotation of seats for women after delimitation is also something that has spoken about. And this is, of course, specifically for elected representatives and not nominated ones is the purpose of this entire bill is what we understand. We also understand that this is going to be talking about the entire aspect of, whether it will have specifically quota within quota. At this point of time, at least no specific mention of that. But it has said that, in fact, if I can come again on that aspect, it says that 1/3 of seats already reserved for scheduled castes and scheduled tribes to be reserved for women. Overall, 1/3 of seats reserved for women will include the 1/3 reserved for them in the SC/ST category as well. So that is the quota within quota demand that has been made by several political parties. That seems to have been accepted at this point of time in the form of this particular bill. The bill has been named Nari Shakti Bandhan is what we understand. So all the details of this particular bill, access right here on Times Now. We're bringing to you all the details of the women's reservation bill while the political debates have surrounded what could be possible, what is the speculation. We're bringing to you the hard facts of what is contained within this bill, a copy being accessed exclusively by Times Now, which we're bringing to our viewers for the very first time. So remember that at this point, in this form and in this shape, it does appear the bill would be rather non-controversial, given that most of the demands have been accessed. 1/3 demand, of course, as well as quota within quota. All of these aspects have been addressed in this particular bill copy, which has been accessed exclusively by Times Now. Madhav, do stay on with us. Let's go across to Siddharth, who's joining us with a copy of this bill. Siddharth, can you get us some of the important features, the key aspects of it? Yes, Meghna, we're the only channel to get our viewers the copy of this bill. And let me just take you through the operative portions very quickly. And that's on page 2 when, of course, we're dealing with Article 330 of the Constitution. And that's where a provision for this reservation has been made. It says after Article 330 of the Constitution, the following article shall be inserted, namely, seats shall be reserved for women in the House of the People. So that's point number 1. As nearly as may be, 1/3 of the total number of seats reserved under Clause 2 of Article 330 shall be reserved for women belonging to the scheduled castes or scheduled tribes. Just to give you a background, Meghna, Article 330 in the Indian Constitution pertains to seats that have been reserved in the House of the People, which is the Lok Sabha, for members of the scheduled castes and the scheduled tribes community. And then it says, as nearly as may be, 1/3, including the number of seats reserved for women belonging to the SC and the ST communities, of the total number of seats to be filled by direct election to the House of the People shall be reserved for women. So 1/3 of the overall number of seats out of 543, I'm just kind of giving you a scenario right now, a numerical scenario, will be reserved for women. And also the 87 odd seats that have been reserved for the scheduled castes and the 40 odd for the scheduled tribes,
those will also carry a 1/3 reservation for women. So this, of course, the numbers will change depending on the delimitation exercise that will take place in 2026, where the overall number of seats in the Lok Sabha is expected to expand. However, 1/3 of seats to be reserved for women, and the reservation will also be carried into the existing reservation for scheduled castes and scheduled tribes in the Lok Sabha. This will also be applicable to all the state assemblies in the Union of India, and also, of course, the Delhi Assembly as well, which is covered under Article 239AA. Well, Siddharth, do stay on with us. A couple of clarifications I'd like to come back to you for. But let me go across to Shivani also, who's joining us. Shivani, it's very interesting because when we are looking through the entire contours of it, one of the big aspects that we've been highlighting, Madhav's also spoken about it, so did Siddharth, the fact that it is only going to happen after delimitation, which is slated for 2026. Only after that can this process of reservation be carried out. Certainly, Meghna, as we see that how after the announcement of this particular women's reservation bill, that is actually a big change. It has been a long pending bill that has not come to the table in the Lok Sabha. Now it has been announced, and Arjun Meghwal, the law minister, will table it today itself. As we have been seeing, the proceedings have already begun. And after the delimitation, that is to be scheduled for 2026. So probably we'll see that this kind of bill, and after all the changes, if it happens, we will see a large number of women representatives as people's representatives in Lok Sabha and all the assemblies in the next Lok Sabha election that would be scheduled for 2029. So this is a big change that would come, and in this objective also, if we see the document that has been accessed by the Times network, in this document it is very clearly mentioned that as India is entering Amrit Kal, Nari Shakti needs to be represented better. We should have more number of women in the people's representatives, that is the Lok Sabha as well as the state assemblies. And here Madhav and Siddharth has been breaking up these details, that how this is a matter of quota within quota. So the numbers will be decided, what share of numbers will come to the women in Lok Sabha and the state assemblies, because this will be something which we need to work upon. We need to see after the bill is passed. But certainly this is a big change, big historical change that Prime Minister was talking about. And in his address also he has said that this will be a big change that Parliament is moving on with in Lok Sabha, and women's reservation bill will actually give more members in Lok Sabha as women. And the whole sense we get from what was hinted by Prime Minister on 15th of August also, while he was addressing that we need to encourage Nari Shakti, we need a lot of women encouragement. We have 50% women as India's population, so we need more people. So all this was coming with a meticulous preparation from the government side, and that's what we've been witnessing since past few days, since the special session of Parliament was called and speculations were on. And yesterday's cabinet meeting also, it all indicated how this has been passed, the planning has been done, and when now it will be tabled anytime soon by Arjun Meghwal, we'll see a big change in the coming for women representatives in Lok Sabha and the state assemblies. And also the credit war has started. You see a lot of celebration already happening outside Congress headquarters. Absolutely. We'll go across to Akanksha in just a bit and talk more about the credit war. But Siddharth, I'd like you to come in a quick clarification. The 1/3 reservation, the 33% reservation also includes the reservations within the SC/ST reserve seats as well. Absolutely. So just to extrapolate the scenario here to the current numbers as they exist in the Lok Sabha, of course, this is not a realistic scenario for the simple reason that these numbers are likely to change following the delimitation exercise in 2026. But we have 543 members of Parliament in the Lok Sabha. If 1/3 of those seats are now reserved for women, that takes you to 181 reserved for women. Now you have approximately 84 seats that are reserved for the scheduled castes. You have 47 seats reserved for the scheduled tribes. So that takes you to 131. So 131 out of 543 are reserved for the SC. Sorry to interrupt you. We need to get these numbers out. We'll come back to you. But Shama Mohammed of the Congress Party is also joining us. Shama Mohammed, your first reaction. Finally, the Prime Minister has spoken about it. It is all set to be tabled as well. The much awaited women reservation bill. Well, I am extremely happy that the women's reservation bill, which has been in the cold storage for the last 9.5 years, is finally coming out, and it's going to be tabled. And
as we all know, the Congress party and the UPA government have been at the helm of it for so many years. We got it passed in 2010 in the Rajya Sabha, but we couldn't pass it in the Lok Sabha since we did not have the numbers. And I recall very well in 2015, Mrs. Gandhi, Sonia Gandhi ji, wrote a letter to the Prime Minister to pass it at the earliest. She has been at the helm of it for a very, very long time, very persuasive. Even Rahul Gandhi ji always, in our party, also wants more women participation. He's been talking about it. Our CWC resolution 2 days ago, in fact, said that please bring in the women's reservation bill. We, even though in opposition, will support you, both in Lok Sabha and the Rajya Sabha. But of course, in the Rajya Sabha, it's already been, it was passed in 2010. So we did not have the numbers. Mr. Modi had the numbers for the last 9.5 years. But would you not credit him with the fact that at least they have gotten it done? Because the BJP says, it's like saying that yes, the team has won it, but let's not give any credit to the captain. Is that what the Congress is doing? No, we are not saying that. I mean, it can't, because we have seen their own social media IT cell head, Amit Malviya, cursing and saying that we want women's reservation, while Modi does not. Those were his tweets then. So, we know what Yogi Adityanath had said about it, was against it totally and completely. So you need to ask these questions to their leaders. Why none from our party has ever said anything against the women's reservation bill, because each man and woman stands by it. Every member of parliament in our party stands by it. So we definitely have been behind this. And we know that if Narendra Modi wants to pass anything, if he really wants to do it, he goes out and does it. So it's very good. I'm happy. The Prime Minister of India and they have passed it, but you can't completely take it out of UPA. We have also the Congress party, Mrs. Sonia Gandhi, Dr. Manmohan Singh, Rahul Gandhi has always been there, always pushing for women's rights. Absolutely. And today we are, as a nation, hoping for a historic day. Shama Mohammed, one quick question. The Prime Minister said, "Ab ye chote-chote baatein chhod dijiye." Do you think today we can get past the politics? Today we can forget about the politics, the credit. Today let's rejoice that women have had their say or will be having their say. Can we do that today? But if we were being petty, we wouldn't be telling you to pass the bill, isn't it? We are not stopping you from passing the bill. We are saying please do it. Petty people don't allow when they're not in power to pass it. Okay, so you're not being petty about it, and we are going to hopefully work together. We are very happy this is going to happen, and we are for it. Thank you so much, Shama Mohammed. Sorry to interrupt you, but these are the live visuals which are coming in from the Parliament. As you can see, some of the women achievers who are arriving at the Parliament. You can catch a glimpse there in a white sari. That was Kangana Ranaut. You also have visuals of PV Sindhu, as well as Saina Nehwal will be arriving as well. These are the visuals coming in. Shashi Panja has also spoken, one of the parliamentarians, at a time when the women achievers of India today are being taken over and being brought in as special guests. This is what Shashi Panja has to say. As we said, that All India Trinamool Congress has always been the flag bearer or the torch bearer vis-a-vis women's reservation bill, and always wanted that it should become a law of reservation of 33% for women candidates in parliament and in state legislatures. Now, till that became in practically every session of parliament, we would not lose an opportunity to broach this topic, and that this discussion should be on. Presently, the union government, which is a BJP-led government, has been in power from, say, 2014 to 2023 now. And 9 years into government, they also had it as one of their agenda in their manifesto in 2014 and 2019. But why did it take so long for them to, today we see there is a special session in which probably this bill will come up for discussion. Third is that All India Trinamool Congress, our chairperson, believes that, and she has maintained it on principle, for which she has always allocated a substantial number of seats for her candidates, women candidates, to stand up for elections in Lok Sabha, be it Lok Sabha or even the state elections, Vidhan Sabha elections. And that is why we have a sizable number of elected MLAs and MPs in state and parliament. Almost more than 35% women MPs in parliament
are from AITC. I think the other party may be BJP. BJP has only about 13% of the women who are there as elected as MPs. Also further on, even in 2021, in Vidhan Sabha elections, that many MLAs winning from our state, and also inclusion in the cabinet as ministers. Again, if you a small example would be in Gujarat, where just about 14 MLAs were women, and out of them only one lady is a minister. So it is always the thought of the political party, because ultimately the political party should give those seats for women. So the thought was always there with AITC. We are in no slugfest, we are in no competition. This is an issue which is dear to us, and that is why it is not a stake or a claim. It should go through that who did first. But yes, surely we can say that the present union government took a lot of time to do this. They could have done it much. Well, there you just heard the TMC saying that we always had the thought, we back this, we are not in a competition. And this is what senior Rajya Sabha MP Kapil Sibal has to say as the credit war has already begun. Listen in to what Kapil Sibal says. Sir, women reservation bill is set to be tabled in the parliament, but the credit war has already been started. BJP is celebrating, the BJP leaders are saying that it is a historic move on the part of the Modi government. Congress is saying that it was our idea, we have taken the initiative, it was the UPA's idea. See, let's really not get into that controversy. If the bill is passed, I think that we should all celebrate, because it is a way to empower women of our country who represent 50% of our population. Who should take the credit for it? Only circumstance. सर इतिहास बता रहा हूँ, कुछ नहीं. On August 14, 1947, the deputy high priest of Thiruvaduthurai Adiman, Nagasaram player Rajaranti Pillai, and Odhuvar, a person who sings devotional songs in Tamil temples, were flown to Delhi capital from the then Madras presidency. The ceremony was conducted as per Tamil tradition, and the Sengal was handed over to Nehru at his house. Okay. इसमें नई बात कुछ नहीं है सर. ये लेकर ऐसा सर बनाया जाता है माहौल कि ये कुछ नई आजादी हुए हैं हमारे देश में, कुछ हो रहा है सर. मैं बहुत सारे सलाह है सर. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये सदन, ये ऐसा मत समझिए कि ये ईंट काटर पत्थर की सदन है सर. ये सदन इज नॉट बिल्ट विथ ब्रिक्स एंड मोटर्स ओनली. इट इज द सोल ऑफ आवर इंडिया. The soul which was long suppressed find utterance in the wake of attaining independence. Sir, again I am saying that soul should not be suppressed again by any design. That is my view, and I am concluding the speech because sir, I do not find the adequate time to make my point further. गृह मंत्री जी, अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है. मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है. अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए. एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए. दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में. कभी नहीं हुआ है. माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों चीजों को माननीय बैठिए ना प्लीज. मैं आगे कहता हूँ प्लीज. मैं आगे माननीय सर प्लीज आप बैठ जाइए. मुझे पूरा तो प्लीज. माननीय अध्यक्ष जी, कल्याण जी प्लीज. माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है. मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए. और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए. माननीय अर्जुन मेघवाल जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले
the Constitution 128th Amendment Bill 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए बिल को अपलोड सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख ले बिल अपलोडेड कर दिया है। अपलोडेड भी है। अध्यक्ष जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए। इसमें बिल लोड कर दिया गया है। आप बिल अपलोडेड भी है। मैं बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी कुछ बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस निकाला गया है और सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में ये जो बिल आया है वो अपलोड हुआ है। सर कृपया चेक करने के लिए बताइए, मेरा इतना ही निवेदन है। मैं अध्यक्ष जी बोलना चाहता हूँ कुछ। अध्यक्ष जी मैं बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। कर दिया ना आपने। ये अपलोड है साहब बता दीजिए। बिल अपलोडेड है गौरव जी, यू कैन सी द बिल। आप इसमें अपलोड है बिल अपलोड है। Well, after Ruckus, as you can just see, the Rajya Sabha had to be adjourned for the time being. In fact, what we just saw right now is Law Minister Arjun Ram Meghwal tabling the Women's Reservation Bill, and then there was a massive ruckus that we saw happening right after that. The opposition started saying that we want to discuss it, and then the speaker kept saying, and we couldn't make out really what the opposition was chanting about, but then the speaker said that the bill is already uploaded. You have new technology now, which is why it's possible for you to look at the bill on the screens in front of you. The speaker was trying to explain this, and amidst the uproar, the Lok Sabha was forced to be adjourned right after the Law Minister Arjun Ram Meghwal presented and tabled the bill. So officially, the bill for women's reservation has been tabled. Of course, the Lok Sabha had to be adjourned. We are getting you minute-by-minute updates from the Parliament. For the timing, a short break. When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries to watch out? Because
Because your voice must be heard, your questions answered, above all else. Frankly Speaking with Navika Kumar. Can I have your attention please? क्या आप दिन की सही शुरुआत ढूंढ रहे हैं? I believe in an action-packed, fast-paced, agenda-setting start to the day. खबर सिर्फ दिखाना नहीं, असर होना भी जरूरी है. I am Amita Wadhwa. I am Pratibha Malhotra, and you're watching the Morning News Hour. Whenever news breaks, you will see us. Process it, analyze it, and broadcast it. After the spot reporters, we are the first responders. We are at the front line of every news event. We are situation analysts, raw, live, and unedited. Pure news, pure passion. Times now, action begins here. When news is troubling. They rented this house right here, and 3 days later she was murdered. When news is for common man. We are asking you for the Aam that why the proper checks and balances were not done, sir. When news is for nation. Right now I'm just few meters away from Pakistani post which is acting as launch pads for terrorists. When news is exclusive. We are reporting from few miles away from the line of actual control. We report from ground zero. Times now. Action begins here. Explosive, exclusive, and beyond. The show that gets you the inside track. A deep dive into stories that matter. Raising questions you won't ask. Your voice is now our voice. Watch Blueprint with me, Meghna, And Pranesh. at 6:30 p.m. every weekday. Only on Times Now. When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं. देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई. She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं. निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में. राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है. Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries to watch out? Because your voice must be heard, your questions answered, above all else. Frankly Speaking with Navika Kumar. Can I have your attention please? क्या आप दिन की सही शुरुआत ढूंढ रहे हैं? I believe in an action-packed, fast-paced, agenda-setting start to the day. खबर सिर्फ दिखाना नहीं, असर होना भी जरूरी है. I am Amita Wadhwa. I am Pratibha Malhotra, and you're watching the Morning News Hour. Whenever news breaks, you will see us. Process it, analyze it, and broadcast it. After the spot reporters, we are the first responders. We are at the front line of every news event. We are situation analysts. आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमेन डेवलपमेंट से वो
वुमन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है। हमारे श्लोकों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक कोट आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, कोट अनकोट। बाबा साहब को किसी ने पूछा कि आप किसी समाज के उत्थान की प्रगति कैसे नापते हो, व्हाट इज द पैरामीटर, कि ये समाज या देश, ये राष्ट्र उन्नति कर रहा है। तो बाबा साहब ने एक कोट कहा था, उसको मैं कोट अनकोट कह रहा हूं। उन्होंने कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी by the degree of progress which women have achieved, महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही है तो मैं समझता हूं कि वो समाज, वो राष्ट्र प्रगति कर रहा है। ये बाबा साहब ने कहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इसलिए भी याद करना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था इसी सेंट्रल हॉल में, जिसमें आज लास्ट फंक्शन हुआ, कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं होगी। इसको कौन दूर करेगा? आने वाली सरकारों का ये इसका काम होगा। लेकिन ये नहीं कर पाए जो सरकारें आई। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में, तो जन धन अकाउंट आया, एक महिला के अकाउंट, एक के अकाउंट नहीं, ये असमानता थी। अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास, एक के घर कच्चा, एक के पक्का, ये असमानता थी जिसकी ये बात अधीर रंजन की कर रहे थे। एक के घर शौचालय, एक के घर शौचालय नहीं, ये असमानता थी। एक के घर बिजली, एक के घर बिजली नहीं। एक के घर गैस, एक के घर गैस नहीं। एक के घर नल से जल और एक के घर नल से जल नहीं। और मुद्रा योजना में भी, जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, स्टैंड अप इंडिया में भी 1 लाख से 10 करोड़ तक का लोन। When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries to watch out? Because your voice must be heard, your questions answered above all else. Frankly speaking with Navika Kumar. Can I have your attention please? क्या आप दिन की सही शुरुआत ढूंढ रहे हैं? I believe in an action-packed, fast-paced, agenda-setting start to the day. खबर सिर्फ दिखाना नहीं, असर होना भी जरूरी है। I'm Mamita Wadhwa. I'm Pratibha. मैं हूँ शिवरा मल्होत्रा and you're watching the Morning News Hour.
Whenever news breaks, you will see us. Process it, analyze it, and broadcast it. After the spot reporters, we are the first responders. We are at the front line of every news event. We are situation analysts, raw, live, and unedited. Pure news, pure passion. Times now, action begins here. When news is troubling. They rented this house right here and 3 days later she was murdered. When news is for common man. We are asking you for the Aam Aadmi that why the proper checks and balances were not done, sir. When news is for nation. Right now I'm just few meters away from Pakistani post which is acting as launch pads for terrorists. When news is exclusive. We are reporting from few miles away from the line of factual control. We report from ground zero. Times now. Action begins here. Explosive, exclusive, and beyond. The show that gets you the inside track. A deep dive into stories that matter. Raising questions you won't ask. Your voice is now our voice. Watch Blueprint with me, Meghna, And Pranesh. at 6:30 p.m. every weekday. Only on Times Now. When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries to watch out? Because your voice must be heard, your questions answered above all else. Frankly speaking with Navika Kumar. Can I have your attention please? क्या आप दिन की सही शुरुआत ढूंढ रहे हैं? I believe in an action-packed, fast-paced, agenda-setting start to the day. खबर सिर्फ दिखाना नहीं, असर होना भी जरूरी है. Welcome back. Now, even as the Women's Reservation Bill was introduced in the Lok Sabha today in the new Parliament building, politics over it has already begun. Now, there's a very strong comment that's come from Jairam Ramesh of the Congress party, who's called it a biggest poll jumla, and the criticism coming from the Congress is as to why the Women's Reservation Bill cannot be implemented before the 2024 Lok Sabha polls. Let me in fact go across to my colleague Aditi, who's been tracking all these reactions, and she has Jairam Ramesh's latest comment with her. Yes, Aditi. Well, Siddharth, Congress has been time and again claiming credit for the women's quota bill, and now that the bill has been tabled, the Congress is calling it a poll jumla and saying that it is not just to impress the voters ahead of 2024 polls. Now, here is the Jairam Ramesh tweet. He says, in a season of election jumlas, this one is the biggest of them all. A huge betrayal of the hopes of crores of Indian women and girls. As we had pointed out earlier, Modi government has not yet conducted the 2021 decadal census, making India the only country in G20 that has failed to carry out the census. Now it says that the reservation for women will come into effect only following the first decadal census conducted after the Women's Reservation Bill has become an act. When will the census take place?
Question mark. The bill also says the reservation come into effect only after the publication of the next census and the subsequent delimitation exercise thereafter. Will the census and delimitation be done before the 2024 elections? Question mark. Basically, the bill gets the headline today with a very vague promise of its implementation date. This is nothing but EVM, event management. Now, the AAP also has called it that the BJP lacks the intent to implement the bill. They have only tabled it, but they have no intentions of implementing a bill. Hence, AAP's Raghav Chadha says that as per clause 5 of the Women Reservation Bill, the reservation will kick only after delimitation exercise. So the opposition is only focusing on Raghav Chadha also echoing what Jairam Ramesh has said. Stay with us, Aditi, because lots of reactions coming from the Congress party, some of whom, of course, have been claiming that this is entirely due to the efforts of the UPA and Sonia Gandhi, who had, of course, batted for this particular bill to be passed. Supriya Srinath has made a comment to that effect, saying that it was Sonia Gandhi who ensured that the bill passed through the Rajya Sabha in the year 2010 when the UPA was in power. The criticism now, of course, on the part of several constituents of the India Alliance is the fact that women's reservation will not be implemented for the upcoming Lok Sabha elections of 2024, that a census exercise, which was actually due for the year 2021, will have to conclude. The reason why the census was not held is because of the COVID-19 pandemic, so the entire process got postponed, and now, of course, the delimitation exercise will also have to take place in the year 2026. So, Aditi has been tracking the reactions coming from the Congress. You have one more reaction with you, Aditi. What is it? Siddharth, we just heard Sonia Gandhi also saying that bill apna hai. Now the Supriya Srinath, the Congress spokesperson, is saying that महिला आरक्षण बिल के सवाल पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा यह अपना है। 2010 में यूपीए की चेयरपर्सन रहते हुए उन्होंने ये बिल राज्यसभा में पास कराया था। इसके बाद लगातार इस बिल के लिए सरकार पर दबाव बनाए रखा। So again, the Congress is claiming that the bill is theirs and this is a win for Congress party. Okay, Aditi, and a short while ago, of course, you've taken us through the reaction that came in from Raghav Chadha, senior leader of the Aam Aadmi Party as well, pretty much echoing what the likes of Jairam Ramesh has said, saying that there appears to be no intent behind implementing this bill because its implementation will now only take place after the delimitation exercise planned for 2026 and, of course, the new cycle of this census. Let me also go across to my colleague Shivani for more on this. Shivani, of course, we witnessed a fairly momentous occasion when Prime Minister addressed the parliamentarians in the Central Hall of Parliament, and then there was, of course, the walk to the new Parliament building. And before we know it, there have been interruptions. There have also been a series of fairly acrimonious exchanges between some of the parliamentarians. Now the Congress party coming out and slamming the BJP because the timeline that's been given for the implementation of the Women's Reservation Bill will now go beyond the delimitation exercise planned well after the 2024 elections have concluded. So that Congress seems to be confused as to whether they should take the credit, whether they should celebrate, because we've seen the celebrations in the Congress headquarters already in the morning with a lot of women there with music and celebrating this bill. And now the criticism comes from Jairam Ramesh and all the other leaders of the Congress. They say that this bill is just an eyewash. He's also called EVM. This is EVM, event management. So Congress seems to be confused now. What should we do with this particular bill? And they have also alleged that the timing is not being told because the delimitation exercise will take some time. It will happen only in 2026. The decadal census has not been done. As you also explained to the viewers, it did not happen because of the COVID-19 pandemic. And on the other hand, Raghav Chadha has also criticized the government and said the bill लाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे. So this kind of comment is now coming. In fact, from other India parties also the reactions are coming. Siddharth, I must mention here, Ram Gopal Yadav has also said that if this bill comes, only the educated class of ladies will get benefited. So they want reservation and quota within this reservation happening for the women representatives in the Lok Sabha and the State Assembly. So there are lots of comments and reactions and politics that has already started as soon as this bill is tabled in the Lok Sabha. But certainly a big move by the government. And now we also sense that a lot of politics will continue until this bill becomes an act. But yes, with this criticism, the credit war is also on.
Right, many thanks, Shivani, for that. You mentioned Mr. Ram Gopal Yadav. Of course, Mr. Mulayam Singh Yadav, back in 2010 as well as 2012, had made comments of a similar nature. Let's also once again listen in to what Prime Minister Narendra Modi had to say in the new Parliament building. नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति बंधन विधेयक 2023। Well, let's also listen in to what the Rajya Sabha Member of Parliament, Mr. Kapil Sibal, had to say about the Women's Reservation Bill. Sir, Women Reservation Bill is set to be tabled in the Parliament, but the credit war has already been started. BJP is celebrating, the BJP leaders are saying that it is a historic move on the part of the Modi government. Congress is saying that it was our idea, we have taken the initiative, it was the UPA's idea. See, let's really not get into that controversy. If the bill is passed, I think that we should all celebrate, because it is a way to empower women of our country who represent 50% of our population. Who should take the credit for it? Only circumstances and events that have happened in the past will tell. What prevented the BJP to introduce the bill in 2014? I think every year we've been saying in Parliament, outside Parliament, when are you going to bring the bill? Nothing prevented them. They have absolute majority in the Lok Sabha, and the Congress party was supporting them in the Rajya Sabha, so there was no impediment in the way of Parliament in passing the bill. So why didn't they bring it in 2014? So 2014, the first 5 years passed, then 2019, the next almost 5 years have passed, and now at the cusp of the end of the 10th year, right, Modi government has suddenly realized, Modi ji has suddenly realized, now 2024 is upon us. Why not get some political benefit and have it passed? And we don't have to bear the burden of anything, because it will be implemented in 2029. What else is this but pure politics? And that's what BJP does all the time, selling a dream, telling how pro-women they are, without implementing it for the 10 years that they were in power. But sir, do you think, as it is also being demanded by many of the parties, that there should be sub-categorization as well in this bill? Do you agree to that, sir? No, why should I agree or disagree? Let's see what the bill says. But would it be feasible for the... I don't know. Let the bill say whether it's feasible, not feasible. Why should I comment? I can only say that they set up the Rohini Commission in 2017. The Rohini Commission made a recommendation, or first gave a report, that 25% of all reservation goes to a dominant class. Of all the reservations, it goes to a dominant class. And then of the 25%, 10% goes to the dominant within the dominant. And so they recommended that you should have a census. And then they withdrew the recommendation, obviously at the instance of the BJP. So they are not interested in the census, they are not interested to find out what is the extent of the other backward classes. And in court, when we say that why don't you disclose us the census figures, they oppose it. So really they are not being quote unquote honest about it. Sir, you have also raised a point in your tweet that they might lose the elections in Uttar Pradesh. And recently, even a video of the UP Chief Minister Yogi Adityanath has also surfaced on social media. It was being said in the past by Yogi Adityanath that majority of the MPs are not in favor of Women Reservation Bill, and this should be discussed within the party first. As he has mentioned that हम कांग्रेस के पाप को क्यों अपने सिर पर लें? What do you want? Let the yogis and non-yogis discuss it. Why do you want to ask my comment? But you have also mentioned that they might lose the elections in UP. Well, we'll see what the bill says. Then only will I say. I said, if the bill comes, let's see what the bill says. I don't want to sort of, I'm not a yogi who can predict the future. But sir, according to you, why there was so much of delay by this government for this bill? I've already explained in my comment to you why there was delay. What prevented them from bringing it in 2014? You have the answer now.
One last question I would like to ask, sir. Today, Prime Minister Narendra Modi is going to take the copy of Constitution to the new Parliament building, and all of the MPs are also going to follow him. But the point here which is being raised is that President of India was not being present there. She was not even there during the inauguration of the new Parliament building. Your comments on that? All that I can say is India, that is Bharat without the President. How does it look? We'll slip into a very short break for the time being. We'll continue to track this story and much more on the other side. Stay tuned. When journalism is led by integrity, and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth, and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9, only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries to watch out? Because your voice must be heard, your questions answered, above all else. Frankly speaking, with Navika Kumar. Can I have your attention, please? क्या आप दिन की सही शुरुआत ढूंढ रहे हैं? I believe in an action-packed, fast-paced, agenda-setting start to the day. खबर सिर्फ दिखाना नहीं, असर होना भी जरूरी है. I'm Mamita Vadva. I'm Pratibha Tehushika Malhotra, and you're watching the Morning News Hour. Whenever news breaks, you will see us. Process it, analyze it, and broadcast it. After the spot reporters, we are the first responders. We are at the front line of every news event. We are situation analysts, raw, live, and unedited. Pure news, pure passion. Times Now, action begins here. When news is troubling. They rented this house right here, and 3 days later she was murdered. When news is for common man. We are asking you for the Aam Aadmi that why the proper checks and balances were not done, sir. When news is for nation. Right now, I'm just few meters away from Pakistani force which is acting as launch pads for terrorists. When news is exclusive. We are reporting from few miles away from the line of factual control. We report from ground zero. Times Now. Action begins here. Explosive, exclusive, and beyond. The show that gets you the inside track. A deep dive into stories that matter. Raising questions you won't ask. Your voice is now our voice. Watch Blueprint with me, Meghna, And Pranesh. at 6:30 p.m. every weekday. Only on Times Now. When journalism is led by integrity, and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth, and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth.
don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white. Not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में Welcome back. Even as the Kokarnag operation has now entered its 7th day, there's been a breakthrough finally. 2 terrorists have now been reported killed, including Lashkar-e-Toiba terrorist and commander Uzair Khan. Now, he's been killed by security forces who've been waging a protracted battle with terrorists who were hiding in the Gadol forest area of Kokarnag in Anantnag district. The dead body of another terrorist is yet to be retrieved. The ADGP of Kashmir has confirmed that the Kokarnag operation is over. The search operations, however, will continue. Those search operations will, of course, involve retrieving the body of one of the other terrorists who's now been killed in this particular operation. Uzair Khan, the LET terrorist and commander, has also been neutralized in this encounter. Let me go across to my colleague Sahil, who's been tracking all these updates. Sahil, tell us the latest, because this is a major breakthrough that's now been achieved on the part of our security forces. Well, in fact, the police authorities here in Kokarnag have confirmed that the 2 Lashkar-e-Toiba terrorists have been killed in this operation, in Kokarnag operation. One, of course, is the self-styled commander of Lashkar-e-Toiba, Uzair Khan, who is in fact the resident of Kokarnag itself. He has been killed, and arms and ammunition have been recovered from the encounter spot. The ADGP Kashmir, Mr. Vijay Kumar, has also confirmed that through drone cameras, they have in fact spotted a dead body near the encounter site, and they in fact say it is the dead body of second militant, but that has not been in fact retrieved yet. So 2 terrorists have been killed in this Kokarnag operation that in fact started on last Wednesday on September 13 at around 1:30 p.m. There was a contact between in fact the security agencies and the terrorists hiding in the area. Security agencies had input about the presence of 2 to 3 terrorists in this particular hideout in Kokarnag area of Gadol. In fact, the 19 Rashtriya Rifles commanding officer, Mr. Who was in fact leading from the front, and there are 2 other officers as well who in fact then received critical blood injuries in the initial exchange of gunfire, and this encounter in fact stretched up to 7 days, and now finally on the 7th day ADGP Kashmir, Mr. Vijay Kumar, has confirmed that they have killed in fact 2 terrorists. The dead body of Uzair Khan, the self-styled commander of Lashkar-e-Toiba, has been recovered. The arms and ammunition being used by the LET commander have been recovered from the encounter spot, but the dead body of another terrorist killed in this operation has not been recovered so far. On our part, in fact, 3 officers have laid down their lives. This includes 2 army officers and 1 Jammu and Kashmir police official, and one. Well, that's an important piece of breaking news that you've got us about the encounter having concluded. However, the search operations will continue. Let's also listen into what the ADGP of Jammu and Kashmir, Mr. Vijay Kumar, had to say a short while ago. LET का जब LET कमांडर उजर मारा गया, उसका हथियार मिल गया, बॉडी भी रिट्रीव हो गया है। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है। बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड से ग्रेनेड की संभावना है वहाँ पर है। सर कितने टेररिस्ट वहाँ पे थे? टोटल हम लोगों के 2 से 3 का खबर था। हो सकता है तीसरा डेड बॉडी भी कहीं मिले, इसलिए सर्च पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सर्च पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी तक में उजैर खान LET कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्रीव भी कर लिया हम लोग। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है। सर कोई ओवर है सर्च ऑपरेशन सिर्फ होने? सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा, क्योंकि अब बहुत सारे एरिया खाली है, ब्लाइंड सेल है, उसको इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम खोज रहे हैं। डेड बॉडी 2 कैजुअल्टीज कितनी है सर?
जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे 3 ऑफिसर कलीग शहीद हुए, एक जवान भी शहीद हुए हैं। We're slipping into a very short break for the time being. Thanks a lot, Suhail, for all the updates that you've given us on this very important development. We'll come back on the other side. Kritsween will take you through the headlines. But in the meantime, we just need to cut to the Rajya Sabha, the upper house of the new parliament, where Prime Minister Narendra Modi is now addressing the MP. इससे पहले मुझे लोकसभा में भी अपनी भावना को व्यक्त करने का अवसर मिला था। अब राज्यसभा में भी आज आपने मुझे अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं। आदरणीय सभापति जी, हमारे संविधान में राज्यसभा की परिकल्पना उच्च सदन के रूप में की गई है। संविधान निर्माताओं का ये आशय रहा है कि ये सदन राजनीति की आपाधापी से ऊपर उठ करके गंभीर बौद्धिक विचार विमर्श का केंद्र बने और देश को दिशा देने का सामर्थ्य यहीं से निकले, ये स्वाभाविक देश की अपेक्षा भी रहे और लोकतंत्र की समृद्धि में ये योगदान ही उस समृद्धि को में अधिक मूल्य वृद्धि कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अनेक महापुरुष रहे हैं, मैं सबका उल्लेख तो न कर पाऊं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी हो, गोविंद वल्लभ पंत साहब हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, प्रणब मुखर्जी साहब हो, अरुण जेटली जी हो, ऐसे अनगिनत विद्वान श्रेष्ठीजन और सार्वजनिक जीवन में वर्षों तक तपस्या किए हुए लोग इस सदन को सुशोभित किया है, देश का मार्गदर्शन किया है। ऐसे कितने ही सदस्य जिन्होंने एक प्रकार से व्यक्ति स्वयं में एक संस्था के रहे, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक के रूप में अपना सामर्थ्य देश को उसका लाभ देने वाले लोग भी हमें रहे हैं। संसदीय इतिहास के शुरुआती दिनों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने राज्यसभा के महत्व पर कहा था कि पार्लियामेंट इज नॉट ओनली ए लेजिस्लेटिव बट ए डेलिबरेटिव बॉडी। राज्यसभा से देश के जनता की अनेक ऊंची अपेक्षाएं हैं, सर्वोत्तम अपेक्षाएं हैं और इसलिए मान्य सदस्यों के बीच गंभीर विषयों की चर्चा और उसे सुनना, ये भी एक बहुत बड़ा सुखद अवसर होता है। नया संसद भवन एक सिर्फ नई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन ये एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। हम व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं, जब एक नए वातावरण का मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूंगा, उसका सर्वाधिक सकारात्मक वातावरण में मैं काम करूंगा, एक सहज स्वभाव होगा। और अमृत काल की शुरुआत में ही इस भवन का निर्माण होना और इस भवन में हम सबका प्रवेश होना, ये अपने आप में हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों की जो आशा आकांक्षा है, उसमें एक नई ऊर्जा भरने वाला बनेगा, नई आशा और नया विश्वास पैदा करने वाला। आदरणीय सभापति जी, हमें तय समय सीमा में
लक्ष्यों को हासिल करना है, क्योंकि देश, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। एक कालखंड था जब सामान्य मन को लगता था कि ठीक है, हमारे माँ बाप भी ऐसे गुजारा किया, हम भी कर लेंगे, हमारे नसीब में ये था, हम जी लेंगे। आज समाज जीवन की और खास करके नई पीढ़ी की सोच वो नहीं है, और इसलिए हमें भी नई सोच के साथ, नई शैली के साथ सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारे कार्य का व्याप भी बढ़ाना पड़ेगा। हमारी सीमा, सोचने की जो सीमाएं हैं, उससे भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमारी क्षमता जितनी बढ़ेगी उतना ही देश की क्षमता बढ़ाने में हमारा योगदान भी बढ़ेगा। आदरणीय सभापति जी, मैं मानता हूं कि इस नए भवन में, ये उच्च सदन में, हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से संसदीय शुचिता के एक प्रतीक के रूप में देश की विधानसभाओं को, देश की स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को, वहां की सारी व्यवस्थाओं को प्रेरणा दे सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये स्थान ऐसा है कि जिसमें ये सामर्थ्य सबसे अधिक है, और इसका लाभ देश को मिलना चाहिए, देश के जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए, चाहे वो ग्राम प्रधान के रूप में चुना गया हो, चाहे वो संसद में आया हो। और ये परंपरा यहाँ से हम कैसे आगे बढ़ाएं। आदरणीय सभापति जी, पिछले 9 वर्ष से आप सबके साथ से, सहयोग से देश की सेवा करने का हमें मौका मिला। कई बड़े निर्णय करने के अवसर आए, और बड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर फैसले भी हुए, और कई तो फैसले ऐसे थे जो दशकों से लटके हुए थे, उन फैसलों को भी, और ऐसी बातें थी जिसको बहुत कठिन माना जाता था, मुश्किल माना जाता था, और राजनीतिक दृष्टि से तो उसको स्पर्श करना भी बहुत ही गलत माना जाता था। लेकिन सबके बावजूद भी हमने उस दिशा में कुछ हिम्मत दिखाई। राज्यसभा में हमारे पास उतनी संख्या नहीं थी, लेकिन हमें एक विश्वास था कि राज्यसभा दलगत सोच से ऊपर उठ करके देश हित में जरूर अपने फैसले लेगी। और मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि उदार सोच के परिणाम हमारे पास संख्या बल कम होने के बावजूद भी आप सभी माननीय सांसदों की मैच्योरिटी के कारण, समझ के कारण, राष्ट्रहित के प्रति अपनी जिम्मेवारी के कारण, आप सबके सहयोग से हम कई ऐसे कठिन निर्णय भी कर पाए, और राज्यसभा की गरिमा को ऊपर उठाने का काम सदस्य संख्या के बल पर नहीं, समझदारी के सामर्थ्य पर आगे बढ़ा। इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है। और इसलिए मैं सदन के सभी माननीय सांसदों का, जो आज वह हैं, जो इसके पहले थे, उन सब का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, लोकतंत्र में कौन शासन में आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कब आएगा, ये क्रम चलता रहता है, वो बहुत स्वाभाविक भी है, और वो लोकतंत्र की स्वाभाविक उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति भी है। लेकिन जब भी विषय देश के लिए सामने आए, हम सब ने मिलकर के राजनीति से ऊपर उठ करके देश के
हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने का प्रयास किया है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा एक प्रकार से राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है। एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और अब हम जब कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल दे रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि एक अत्यंत सहयोग के साथ अनेक ऐसे मसले रहे हैं, देश आगे बढ़ा है। कोविड का संकट बहुत बड़ा था, दुनिया ने भी परेशानी झेली, हम लोगों ने भी झेली है, लेकिन हमारे फेडरलिज्म की ताकत थी कि केंद्र और राज्यों ने मिलकर के जिससे जो बन पड़ता है बन कर करके देश की बहुत बड़े संकट से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। और ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ताकत को बल देता है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को कि एक ताकत उसने अनेक संकटों का सामना किया है। और हमने सिर्फ संकटों के समय नहीं, उत्सव के समय भी दुनिया के सामने भारत की उस ताकत को पेश किया है जिससे दुनिया प्रभावित हुई है। भारत की विविधता, भारत के इतने राजनीतिक दल, भारत में इतने मीडिया हाउसेस, भारत के इतना रहन सहन, बोलियां, ये सारी चीजें G20 समिट में, राज्यों में जो समिट हुई, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत देर से आए, लेकिन उसके पहले देश के 60 जितने शहरों में 220 से ज्यादा समिट होना, और हर राज्य ने बढ़ चढ़ करके बड़े उत्साह के साथ विश्व को प्रभावित करें इस प्रकार से मेहमान नवाजी भी की। और जो डेलिब्रेशंस हुए उसने तो दुनिया को दिशा देने का सामर्थ्य दिखाया है। और ये हमारे फेडरलिज्म की ताकत है, और उसी फेडरलिज्म के कारण और उसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कारण आज हम यहाँ प्रगति कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन में भी, नई हमारी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी उस फेडरलिज्म का एक अंश जरूर नजर आता है, क्योंकि जब बनता था तब राज्यों से प्रार्थना की गई थी कि कई बातें ऐसी हैं जिसमें हमें राज्यों की कोई न कोई याद यहाँ चाहिए, लगना चाहिए कि ये भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ है। और यहाँ कई प्रकार की ऐसी कलाकृतियाँ, कई चित्र जो पूरे हमारी दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो राज्यों ने पसंद करके अपने यहाँ राज्य की श्रेष्ठ चीज भेजी है। यानी एक प्रकार से यहाँ के वातावरण में भी राज्य भी है, राज्यों का की विविधता भी है, और फेडरलिज्म की सुगंध भी। आदरणीय सभापति जी, टेक्नोलॉजी ने जीवन को बहुत तेजी से प्रभावित किया है। पहले जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आते में 50 साल लग जाते थे, वो आजकल कुछ हफ्तों में आ जाते हैं। आधुनिकता अनिवार्यता बन गई है, और आधुनिकता को मैच करने के लिए हमने अपने आप को भी निरंतर डायनेमिक रूप से आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तब जाकर के उस आधुनिकता के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, पुराने भवन में हमने, जिसको अभी आपने संविधान सदन के रूप में कहा, हमने वहाँ कभी आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े आन बान शान के साथ मनाया। 75 साल का हमारी यात्रा की तरफ हमने देखा भी, और नई दिशा, नया संकल्प करने का प्रयास भी शुरू किया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नए संसद भवन में आज़ादी की जब हम शताब्दी मनाएंगे, वो स्वर्ण शताब्दी विकसित भारत की होगी, डेवलप इंडिया की होगी, मुझे पूरा विश्वास है।
पुराने भवन में हम 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचे थे। मुझे विश्वास है कि नई संसद भवन में हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में स्थान प्राप्त करेंगे। पुराने संसद भवन में गरीब कल्याण के अनेक इनिशिएटिव हुए, अनेक काम हुए। नए संसद भवन में हम अब 100% सैचुरेशन जिसका हक है उसको पूरा मिले। आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन की दीवारों के साथ साथ हमें भी अब टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब सारी चीजें हमारे सामने आईपैड पर हैं। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि बहुत से माननीय सदस्यों को अगर कल कुछ समय निकाल करके उनकी अगर परिचित करा दिया जाए टेक्नोलॉजी से, तो उनकी सुविधा रहेगी। वहाँ बैठेंगे, अपनी स्क्रीन भी देखेंगे, ये स्क्रीन भी देखेंगे, और टेक्नोलॉजी वाले अगर, तो हो सकता है कि उनको कठिनाई ना आए। तो आज मैं अभी लोकसभा में था तो कई साथियों को इन चीज़ों को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही थी। तो ये हम सबका दायित्व है कि हम उसमें सबकी मदद करें। तो कल कुछ समय निकाल करके अगर ये हो सकता है तो अच्छा होगा। आदरणीय सभापति जी, इस डिजिटल का युग है। हमने इस सदन से भी उस चीज़ों से आदतन हमारा हिस्सा बनाना ही होगा। शुरू में थोड़ा दिन लगता है, लेकिन अब तो बहुत सी चीज़ें यूजर फ्रेंडली होती हैं, बड़े आराम से इन चीज़ों को अडॉप्ट किया जा सकता है। हम इसको करें। मेक इन इंडिया एक प्रकार से ग्लोबली गेम चेंजर के रूप में हमने इसका भरपूर फायदा उठाना है। और मैंने कहा, वैसे नई सोच, नया उत्साह, नया उमंग, नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़कर के कर सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, आज नया संसद भवन देश के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले का साक्षी बन रहा है। अभी पार्लियामेंट लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया है, वहाँ पर चर्चा होने के बाद यहाँ भी आएगा। नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में जो पिछले अनेक वर्षों से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम आज हम सब मिलकर के उठाने जा रहे हैं। सरकार का प्रयास रहा ईज ऑफ लिविंग का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का। और जब ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उसकी पहली हकदार हमारी बहनें होती है, हमारी नारी होती है, क्योंकि उसी को सब चीजें झेलनी होती है। और इसलिए हमारी प्रयास रहा है और राष्ट्र निर्माण की उनकी भूमिका बढ़े, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेवारी है। अनेक नए नए सेक्टर्स हैं जिसमें महिलाओं की शक्ति, महिलाओं की भागीदारी निरंतर सुनिश्चित की जा रही है। माइनिंग में बहनें काम कर सके, निर्णय हमारे ही सांसदों की मदद से हुआ। हमने सैनिक स्कूलों को बेटियों के लिए दरवाजे खोल दिए, क्योंकि बेटियों में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को अब अवसर मिलना चाहिए। उनके मन में इफ्स एंड बट्स का युग खत्म हो चुका है। हम जितना सामर्थ्य, हम जितनी सुविधा देंगी उतनी सामर्थ्य हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां, हमारी बहनें दिखाएंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान वो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, समाज ने इसे अपना बनाया है। और बेटियों का मान सम्मान की दिशा में समाज में एक भाव पैदा हुआ है। मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसका लाभ उठाया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आज भारत में महिलाओं का सक्रिय योगदान नजर आ रहा है। ये अपने आप में मैं समझता हूँ उनके
परिवार के जीवन में भी उनके सामर्थ्य को प्रकट करता है, जो सामर्थ्य अब राष्ट्र जीवन में भी प्रकट होने का वक्त आ चुका है। हमारी कोशिश रही है कि हमारे माताओं बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उज्ज्वला योजना, हमें मालूम है गैस सिलेंडर के लिए पहले एमपी के घर के चक्कर काटने पड़ते थे, गरीब परिवारों तक उसको पहुंचाना, मैं जानता हूँ बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है, लेकिन महिलाओं के जीवन को ध्यान में रखते हुए उस काम को किया। महिलाओं के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक लंबे अरसे से राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक लाभालाभ का शिकार हो चुका था, इतना बड़ा मानवीय निर्णय, लेकिन हम सभी माननीय सांसदों की मदद से उसको कर पाया। नारी सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने का काम भी हम सब कर पाए हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट G20 की सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा और दुनिया के कई देश हैं जिनके लिए विमेन लेड डेवलपमेंट विषय थोड़ा सा नया सा अनुभव होता था, और जब उनकी चर्चा में सुर आते थे कुछ अलग सी सुर सुनने को मिलते थे, लेकिन G20 के डिक्लेरेशन में सबने मिलकर के विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को अब भारत से दुनिया की तरफ पहुंचा है, ये हम सब के लिए गर्व है। आदरणीय सभापति जी, इसी बैकग्राउंड में लंबे अरसे से विधानसभा और लोकसभा में सीधे चुनाव में बहनों की भागीदारी सुनिश्चित करने का विषय है, और ये बहुत समय से आरक्षण की चर्चा चली थी। हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया है, लेकिन और ये 1996 से इसकी शुरुआत हुई है, और अटल जी के समय तो कई बार बिल लाए गए, लेकिन नंबर कम पड़ते थे, कुछ उग्र विरोध का भी वातावरण रहता था, एक महत्वपूर्ण काम करने में काफी असुविधा होती थी। लेकिन जब नए सदन में आए हैं, नया होने का एक उमंग भी होता है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का और इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है, जिसको आज लोकसभा में रखा गया है। कल लोकसभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राज्यसभा में भी आएगा। मैं आज आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक ऐसा विषय है जिसको अगर हम सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएंगे तो सच अर्थ में वो शक्ति अनेक गुना बढ़ जाएगी। और जब भी बिल हम सबके सामने आए, तब मैं राज्यसभा के सभी मेरे माननीय सांसद साथियों से आज आग्रह करने आया हूं कि हम सर्वसम्मति से जब भी उसकी निर्णय करने का अवसर आए, आने वाले 1-2 दिन में आप सबके सहयोग की अपेक्षा साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using
petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries to watch out? Because your voice must be heard, your questions answered, above all else. Frankly speaking, with Navika Kumar. Can I have your attention, please? क्या आप दिन की सही शुरुआत ढूंढ रहे हैं? I believe in an action-packed, fast-paced, agenda-setting start to the day. खबर सिर्फ दिखाना नहीं, असर होना भी जरूरी है। I'm Mamita Vadva. I'm Pratibha Tehusha Malhotra, and you're watching the Morning News Hour. Whenever news breaks, you will see us. Process it, analyze it, and broadcast it. After the spot reporters, we are the first responders. We are at the front line of every news event. We are situation analysts, raw, live, and unedited. Pure news, pure passion. Times Now. Action begins here. When news is troubling. They rented this house right here, and 3 days later she was murdered. When news is for common man. We are asking you for the Aam Aadmi that why the proper checks and balances were not done, sir. When news is for nation. Right now, I'm just few meters away from Pakistani force which is acting as launch pads for terrorists. When news is exclusive. We are reporting from few miles away from the line of factual control. We report from ground zero. Times Now. Action begins here. Explosive, exclusive, and beyond. The show that gets you the inside track. A deep dive into stories that matter. Raising questions you won't ask. Your voice is now our voice. Watch Blueprint with me, Meghna, And Pranesh. at 6:30 p.m. every weekday. Only on Times Now. When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries to watch out? Because your voice must be heard, your questions answered, above all else. Frankly speaking, with Navika Kumar. Can I have your attention, please? क्या आप दिन की सही शुरुआत ढूंढ रहे हैं? I believe in an action-packed, fast-paced,
एजेंडा सेटिंग स्टार्ट टू द डे। खबर सिर्फ दिखाना नहीं, असर होना भी जरूरी है। I'm Mamita Wadhwa. I'm Pratibha. मैं हूं शिवरा मल्होत्रा and you're watching the Morning News Hour. Whenever news breaks, you will see us. Process it, analyze it. इसीलिए महिलाएं पीछे हैं। आप उनको बात करने नहीं देते, उनके हकूक को आप कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते। One second. Please, honorable members, one second. I'll come to you. Please, honorable finance minister. Honorable Finance Minister. Sir, I'm sorry. I respect the... Excuse me. Please. Sir, we respect the leader of the opposition. But to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We've all been empowered by our party, by our Prime Minister. Rashtrapati Draupadi Murmu ji is an empowered woman. Every MP of my party is an empowered woman. To make a sweeping statement, it might represent their party, although it had women presidents for their party. In spite of that, they can't have women who are empowered. But I object to him making a sweeping generalization of all parties. Leader of the opposition. Please. ये पिछड़ी हुए महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा इनको मिल रहा है। ये हम बोल रहे हैं। इसीलिए once again. Let her respond. Please. Honorable Finance Minister. Draupadi Murmu ji kaun hai? I'm sorry. Opposition leader cannot please insult people like this. Cannot draw differentiation between women. Mahila ke bed mein. No way. How can you draw difference between one woman and another woman? We are asking for reservation for all women. Rashtrapati is a tribal woman. Please. Unacceptable. Please, take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat. 1 second, take your seat. Honorable members, what is being discussed is historic, epochal, justice to half of humanity, something which the people awaited for decades. Several efforts had been made, as the Honorable Prime Minister indicated. Honorable Khadge ji was saying something to which an exception has been taken. One second. I would, honorable members, minimum I expect is unanimity, affirmative step, total support to this historic step which is being taken belatedly and one second. Mr. Tiwari. When journalism is led by integrity
And when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth, and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9, only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries to watch out? Because your voice must be heard, your questions answered above all else. Frankly speaking with Navika Kumar. Can I have your attention please? क्या आप दिन की सही शुरुआत ढूंढ रहे हैं? I believe in an action-packed, fast-paced, agenda-setting start to the day. खबर सिर्फ दिखाना नहीं, असर होना भी जरूरी है। I'm Mamita Vadva. I'm Pratibha Tehusha Malhotra and you're watching the Morning News Hour. Whenever news breaks, you will see us. Process it, analyze it and broadcast it. After the spot reporters, we are the first responders. We are at the front line of every news event. We are situation analysts, raw, live, and unedited. Pure news, pure passion. Times Now, action begins here. When news is troubling. They rented this house right here and 3 days later she was murdered. When news is for common man. We are asking you for the Aam Aadmi that why the proper checks and balances were not done, sir. When news is for nation. Right now, I'm just few meters away from Pakistani force which is acting as launch pads for terrorists. When news is exclusive. We are reporting from few miles away from the line of factual control. We report from ground zero. Times Now. Action begins here. Explosive, exclusive and beyond. The show that gets you the inside track. A deep dive into stories that matter. Raising questions you won't ask. Your voice is now our voice. Watch Blueprint with me, Meghna, And Pranesh. at 6:30 p.m. every weekday. Only on Times Now. When journalism is led by integrity, and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth, and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9, only on Times Now. She asks tough. Very unbiased, balanced speech, sir. At least on the first day, sir. On the first day, at least we can expect. Can you at least we can expect from the leader of the opposition that he is a very experienced person, sir. He is an experienced leader. He was 8-time MLA. Let him speak as a statesman, sir. That is what we expect from him, sir.
सर खड़गे जी, अरे चुप बैठो। खड़गे जी, प्रहलाद जोशी जी तो आपके प्रांत के हैं, उनकी बात को मानिए। क्या देखिए, हिज एक्सपेक्टेशन इज यू एक्ट लाइक अ स्टेट्समैन। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं। अरे मैं देखा हूँ यहाँ पर दिल्ली में क्या करते हैं, वहाँ कर्नाटक के गली में आके क्या करते हैं मुझे मालूम, वो सब मालूम है मुझे। मैं ये मेरे जुबान से ये बात नहीं है, नहीं मेरी जुबान से ये बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर खड़गे जी नहीं अपने भाषण में कहे नहीं। आज दो विचित्र बात हुई। आपने एक सेकंड जरा प्लीज, आपने कहा इस सदन में और मैंने आपको कहा, आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कम वक्तव्य दिए हैं, ये आपने कहा। और आपने कहा कि फॉर्मल दिए हैं प्रेसिडेंट एड्रेस पर, अदरवाइज अब आज ज्यादा दे दिए तो भी आपको आपत्ति होगी। जयराम, he doesn't need your support. He is leader of the opposition. Don't downsize the leader of opposition. Go ahead, sir. No one will speak. सर, मैं ये मेरे जबान से नहीं आया, मैं लिख लिया हूँ। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, किस किस पॉइंट पे बोल रहे थे, वो इस कागज पे लिख के बोल रहा हूँ। अगर ये फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में या फेडरलिज्म के बारे में अगर वो बात नहीं किए, अगर वो कहे तो मैं विड्रॉ कर लेता। देखो, अरे मजबूत करने, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, आप मजबूत करने की बात किए, लेकिन एक एक गवर्नमेंट को ऐसा गिरा दिए, हर गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गिरा दिए, कर्नाटक गवर्नमेंट को गिरा दिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को गिरा दिए, मणिपुर गवर्नमेंट को गिरा दिए। Nothing will go on record, Mr. धर्मेंद्र प्रधान। Mr. प्रधान, nothing will go on record. कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर बड़े उदारता के साथ कहे कि आज जिस प्रकार के हमने शुरुआत कर रहे हैं, एक स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कॉम्पिटेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में कहा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। 2014 में मई महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लिए, तब 14 फाइनेंस कमीशन के निर्णय उनके सामने आया। 14 फाइनेंस कमीशन बनी थी पिछले सरकारों में सर। 10% की क्वांटम जंप उन्होंने देखा नहीं। किस राज्य ने उनको वोट दिया है, किसी ने नहीं दिया, नहीं दिखा सर। हमें ये क्या कहते हैं, वर्षों तक इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दिल्ली में शासन किया। कैसे राज्यों को शासन कर रहे थे? मैं सर आसाम का उदाहरण देना चाहूंगा सर, ये कैसे शासन कर रहे थे। यह सर, ये क्या है? Only leader of the opposition now. Only leader of the opposition take a seat. Take a seat. सर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं जब बात करता हूँ अगर वो गलत है तो बाद में उठ के बात कर सकते हैं। वो हमें यहाँ पर कंपटीशन चलती है, कंपटीशन इस बात की चलती है। आप मुद्दे पर आइए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो ये कंपटीशन बढ़ता है। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम सब जरा होशियार रहिए साहब। कौन आपके पीछे सपोर्ट करते हैं, कौन आपके सामने बात करते हैं, इसका थोड़ा आप ख्याल कर लीजिए। ऐसा खड़गे जी सर, ये खड़गे जी विषय पर रहिए, वरना बात दूर तक जाएगी, इतनी दूर तक जाएगी कि वापस नहीं आएगी। कौन नेता आता है, कितना प्रभावित होता है, सदस्यगण कितना बोलते हैं, ये सबको पता है। तो प्लीज ऑन द सब्जेक्ट। सर, ये जो है बहुत से स्टेट में कमजोर उनको किया जा रहा है। एक तो जीएसटी जल्दी उनको मिलती नहीं, मनरेगा का अमाउंट टाइमली नहीं जाता, और उनके जो समस्याएं हैं, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, उनको जो ग्रांट टाइमली मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अगर वो नहीं मिला तो क्या आप फेडरल स्टेट्स को, जो स्टेट्स हैं, उनको कमजोर किए जैसा होता या मजबूत किए जैसा होता, आप ही बोलिए। तो ये, और दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ साहब, आप डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते हो?
लोकतंत्र के अनुसार चलना चाहते हो और आप लोकतंत्र के बातों के लिए इतने हैं कि हमने ही किया, हमने उसको मजबूत किया, ये सब कहते हो, लेकिन जहां जहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए थे, गवर्नमेंट थे, उनको गिराने का काम आप ही किया। आप विषय से अलग बैठ रहे हैं। माननीय प्रतिपक्ष नेताजी, आई एक्सपेक्ट यू टू प्लीज कंफर्म क्या है साहब इश्यू। देखो ये नहीं, मैं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू हिल्ट सर। One second. Not going to One second. One second. I am not going to hilt. Yes, but you listen to me. I am not going. You will listen to me. अरे one second. Since नहीं तो आप ही चला no, since you have made a very serious reflection concerning the Honorable Finance Minister's ministry, let us respond. Come on, please go ahead. Thank you very much for giving me this opportunity. Nothing will go on record. Accept. Factually incorrect statement has been made by the opposition leader. GST समय पर नहीं मिलता, एकदम गलत. I've even borrowed money and paid the states at least 1 or 2 months in advance each time. 3 times he paid in advance. There is no money pending for any state on GST. No delayed payments on GST. I will give you complete data. I am sorry. And if the states don't give both the honorable leader of the opposition and honorable finance minister will put the documents on record. Yes. Substantiating their stand, either side. I provide the record, sir. Sir, during course of the day. States don't give their utilization. We cannot allow Parliament. It is no. We cannot have free fall of information. To blame like this. The statement. One second. The statement has been categorically contradicted. Both of them are senior functionaries. They are called upon to put documentation on the table of the house during course of the day. Please, and go ahead. ऑर्डर पर रोका गया है, ये गलत है। एलओपी की एक मर्यादा है, उस मर्यादा को खत्म किया जाए। अब देखिए अध्यक्ष महोदय, अगर आप डॉक्यूमेंट दो बोलेंगे पूरे मैं सीएजी के रिपोर्ट्स के और हमारे स्टेट, हर स्टेट को जो ग्रांट जाना था वो सब के कलेक्ट करके फिर बाद में आपको दूंगा। नहीं। No. Honorable leader of the opposition, you have categorically stated. One second. You have categorically stated that as on date, GST payments are pending. Therefore, no CAG. Put that document on record. It's a serious issue. And the Honorable Finance Minister would also do the same during the course of the day. Sir, but because the leader of the opposition stated so authoritatively, he should have the document in his hand. Without that, how did he say? Please conclude, sir. Conclude. ये मेरे This is chairman. This is the first day. Let us set a good example. Please. सर ये ऑब्स्ट्रक्शन मेरे लिए ही क्यों होता समझ में नहीं आया। और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोल रहे, उधर जरा बैठो। When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth
and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The news hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries to watch out? Because your voice must be heard, your questions answered above all else. Frankly speaking with Navika Kumar. Can I have your attention please? क्या आप दिन की सही शुरुआत ढूंढ रहे हैं? I believe in an action-packed, fast-paced, agenda-setting start to the day. खबर सिर्फ दिखाना नहीं, असर होना भी जरूरी है। I'm Amita Wadhwa. I'm Pratibha. मैं हूँ शिवरा मल्होत्रा and you're watching the Morning News Hour. Whenever news breaks, you will see us. Process it, analyze it, and broadcast it. After the spot reporters, we are the first responders. We are at the front line of every news event. We are situation analysts, raw, live, and unedited. Pure news, pure passion. Times Now, action begins here. When news is troubling, They rented this house right here and 3 days later she was murdered. when news is for common man, We are asking you for the Aam Aadmi that why the proper checks and balances were not done, sir. when news is for nation, Right now, I'm just few meters away from Pakistani post which is acting as launch pads for terrorists. when news is exclusive, We are reporting from few miles away from the line of factual control. we report from ground zero. Times Now, action begins here. Explosive, exclusive, and beyond. The show that gets you the inside track. A deep dive into stories that matter. Raising questions you won't ask. Your voice is now our voice. Watch Blueprint with me, Meghna, And Pranesh, at 6:30 p.m. every weekday. only on Times Now. When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The news hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं।
Welcome back. Now, on this momentous occasion, not just the fact that proceedings are taking place in the new Parliament building for the very first time, but the fact that the Women's Reservation Bill had been tabled. There were several prominent personalities who had been invited to witness this occasion. Kangana Ranaut was one of them. Here's what she had to say. हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। इस देश की महिलाओं के लिए इससे बड़ा सम्मानित नहीं किया जा सकता। इससे ज़्यादा न्यू पार्लियामेंट का पहला दिन पहला सेशन था और इसमें महिला सशक्तिकरण महिलाओं के आरक्षण पे ही चर्चा की गई और पहला बिल जो प्रेजेंट किया गया है हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। इस देश की महिलाओं के लिए इससे बड़ा सम्मानित नहीं किया जा सकता। इससे ज़्यादा न्यू पार्लियामेंट का पहला दिन पहला सेशन था और इसमें महिला सशक्तिकरण महिलाओं के आरक्षण पे ही चर्चा की गई और पहला बिल जो प्रेजेंट किया गया है हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता हुई देख के कि औरतों के लिए जो मोदी जी ने ये बिल पास कराया पार्लियामेंट में, उससे क्या होता है एक तो इतने हमारा हिंदुस्तान में एक सिमिलर दर्जा हो गया, कंधे से कंधे मिला के आदमी और औरत हम लोग रह सकते हैं। और जैसे हमेशा बोलते हैं पहला मैं सबसे अच्छी मुझे ये बात लगी कि आज पहला सेशन था नए पार्लियामेंट लिफ्ट चौक हो जाएगी। मेरी प्रॉब्लम समझो, मेरी प्रॉब्लम घर में जब भी कुछ नया घर होता है तो लक्ष्मी को प्रवेश होता है, वैसे ही मुझे लगता है कि अब भारत का घर प्रवेश हो गया है और से तो भारत बहुत आगे जाएगा। We're slipping into a very short break right now. We'll continue tracking this and much more on the other side. Stay tuned. When journalism is led by integrity, and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth, and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries to watch out? Because your voice must be heard, your questions answered above all else. Frankly speaking with Navika Kumar. Can I have your attention please? क्या आप दिन की सही शुरुआत ढूंढ रहे हैं? I believe in an action-packed, fast-paced, agenda-setting start to the day. खबर सिर्फ दिखाना नहीं, असर होना भी जरूरी है। I'm Amita Wadhwa. I'm Pratibha Tehusha Malhotra and you're watching the Morning News Hour. Whenever news breaks, you will see us. Process it, analyze it, and broadcast it. After the spot reporters, we are the first responders. We are at the front line of every news event. We are situation analysts, raw, live, and unedited. Pure news, pure passion. Times Now. Action begins here. When news is troubling. They rented this house right here and 3 days later she was murdered. When news is for common man.
we are asking you for the Aam Aadmi that why the proper checks and balances were not done, sir. When news is for nation. Right now, I'm just few meters away from Pakistani post, which is acting as launch pads for terrorists. When news is exclusive. We are reporting from few miles away from the line of factual control. We report from ground zero. Times now. Action begins here. Explosive, exclusive, and beyond. The show that gets you the inside track. A deep dive into stories that matter. Raising questions you won't ask. Your voice is now our voice. Watch Blueprint with me, Meghna, And Pranesh. at 6:30 p.m. every weekday. Only on Times Now. When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई? She takes on the masters of Indian politics like Taking you through the top 50 news developments this hour at 4 p.m. Prime Minister Modi announces Nari Shakti Bill in the new parliament, declares himself as chosen by God for this pious task. Prime Minister makes a strong pitch for the Women's Reservation Bill, calls for an increased focus on women-led and women-centric development. Law Minister Arjun Meghwal tables the Women's Reservation Bill in the Lok Sabha. Times Now accesses Women's Quota Bill copy. The bill seeks to reserve 1/3 of the seats in the state legislative assemblies and parliament for women and sub-reservation for SCs, STs and Anglo-Indians within the 33% quota. This was the 2010 bill which had made a reservation for the Anglo-Indian community. Congress claims credit for the landmark decision, says that they were the ones who initiated the Women's Reservation Bill in the first place. Congress's Jairam Ramesh launches attack against the centre, terms the move as the biggest election jumla. Mahila Morcha of the Bihar BJP share sweets and offer colours and dance on the beats of drums as they celebrate the tabling of the Women's Reservation Bill. Congress President Mallikarjun Kharge slams the centre over the Women's Reservation Bill, says women are now being used for politics, claims that why is the bill only being implemented post the delimitation and the census. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and other ministers and MPs walk towards the new Parliament building from the old Parliament building. While moving out of the old Parliament building, Prime Minister Modi suggests that the old Sansad should be called as the Samvidhan Sadan. Prime Minister Modi meets members of Parliament at the Central Hall of the old Parliament building. Prime Minister Modi, Rajya Sabha Chairman and Vice President Jagdeep Dhankar, Lok Sabha Speaker Mr. Om Birla and other parliamentarians gather for the joint photo session. For the special session of Parliament, security personnel at the Parliament building were spotted in their new uniforms. While addressing parliamentarians in the old Parliament, Prime Minister Modi hails India's aspirations, saying that they're at a 1,000-year high. Prime Minister Modi instilled confidence in the nation, saying that we'll be a developed country by 2047. While speaking in the old Parliament, BJP's Menaka Gandhi hails Beti Bachao, Beti Padhao, says it has brought a lasting change. Months after the Khalistan Tiger Force chief Hardeep Singh Nijjar
was shot dead in Canada. Prime Minister Justin Trudeau accuses the Indian government of being behind this shooting. After allegations by the Canadian Prime Minister, India's Ministry of External Affairs released a statement and rejects all the allegations, saying that they're absurd and motivated. Canada expels top Indian diplomat as it investigates whether the Indian government was linked to the killing of Hardeep Singh Nijjar on Canadian soil. India hits back at Canada by expelling a senior Canadian diplomat, asks him to leave the country within the next 5 days. Kokarnag operation in Anantnag entered the 7th-day. Army and police initiate a comprehensive combing and search operation in the area. The terrorists are now reported dead. Indian security forces gunned down 2 terrorists in the Kokarnag encounter. LET terrorist Uzair Khan was killed in the operation. Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, along with numerous others, pay homage to bravehearts and sepoy Pardeep Singh, who made the supreme sacrifice during the Anantnag encounter. Karnataka releases 5,000 cusecs of water to Tamil Nadu from Rajya Dam on the Kaveri River. The Kaveri River Management Authority had ordered the Karnataka government to release the water. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar says that we do not have water, but we need to respect the decision of the authority, and hints that they'll now move the Supreme Court. Over the Kaveri water sharing issue, former Karnataka Chief Minister Bommai hits out at the Siddaramaiah Sarkara, saying that the CWMA's order is unscientific, but we don't have a government which can put forth the truth aggressively. Mandya Member of Parliament Sumalata Ambrish meets Union Jal Minister and submits memorandum over Kaveri water issue. Tamil Nadu farmers indulge in a rail roko protest in the Tiruvarur district, demanding that the union government direct Karnataka to release rightful share of the Kaveri water. While in Madhya Pradesh's Rewa, Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal has taken a jibe at its India bloc partner. The Congress party says that there were 2 parties in Punjab who used to loot people, but we managed to stop it. The new CJM court sends Congress MLA Maman Khan to judicial custody for a period of 14 days in connection with the new violence case. Famous music composer and actor Vijay Antony's daughter Lara dies by suicide in Chennai. Depression is said to be the possible reason. Aditya L1's trans the Lagrange point 1 insertion maneuver is performed successfully. ISRO informs that the spacecraft is now on a trajectory that will take it to the Lagrange 1 point, the L1 point, from where it will be able to have an uninhibited view of the sun. Fire breaks out at the Asansol Durgapur Authority office. 10 fire tenders reached the spot. Many documents have been burned to ashes. Atul Malhari Gotsurve, presently Joint Secretary in the Ministry of External Affairs, has been appointed as India's next ambassador to Mongolia. On the occasion of Ganesh Chaturthi, people gather to witness Aarti at Lal Bagh Cha Raja in Mumbai. Devotees in Andheri welcome Ganpati Bappa and celebrate the 54th year of Andheri Cha Raja with immense love and pride. Beautiful pandals decorated by the devotees. A pandal based on the theme of ISRO's Chandrayaan 3 moon mission has been prepared in Raipur in Chhattisgarh. Sand artist Sudarshan Patnaik creates a sand sculpture of Lord Ganesh by installing pieces of steel bowls with a message of world peace. A 42-feet idol of Ganesh made with peepal leaves was placed in the Kolathur area of Chennai. During the Ganesh Utsav, 14,000 police personnel, including 15 IPS, have been deployed in Mumbai. Russian Foreign Minister to participate in the BRICS Foreign Ministers meeting on the sidelines of the 78th session of the United Nations General Assembly session. On the sidelines of the UNGA, US Secretary of State meets Japanese Foreign Minister in New York. Hong Kong to tighten regulation of digital assets after police arrested 6 people following allegations of fraud at an unlicensed cryptocurrency exchange in the city. Thousands of protesters have flooded streets of Guatemala, answering a call issued by the president-elect there to defend the integrity of country's recent polls. The crash site for a stealth fighter jet that went missing during the weekend was located in rural South California after the military asked the public for help. Prince William meets UN Secretary General. The two discussed efforts needed to step up fight against climate change.
Ukrainian president began a high-stakes trip to the US by visiting the country's wounded troops in New York hospital. Big ocean waves caused by a phenomenon known as spring tide crashed into coastal parts of South Africa over the weekend, damaging seaside buildings and sweeping cars through parking lots. Migrants continue to arrive in Lampedusa in unseaworthy boats as Italy's cabinet approved new migrant detention measures. Ecuadorians protested outside the country's constitutional court against a proposed decree, claiming it violates the rights and endangers the natural resources of indigenous residents. It's been a truly historic moment, viewers. 19 September 2023 will be etched in history as the day that India bid farewell to colonial vestiges and embraced a bigger canvas for a Bhavya Bharat. PM Modi led the march from the old parliament building to the new, marking an epochal change in India's constitutional history. It's apt perhaps that on this historic first session in the new parliament, a historic bill has been tabled. The Women's Reservation Bill, which was first tabled 27 years back, today returns with renewed enthusiasm and vigor. It will ensure 335 of the seats in Lok Sabha and all state assembly will be reserved for women. Although the bill categorically says that this will be put into action only after delimitation exercises carried out, here's a rough idea based on current seats as to what women's quota means. 181 of the 153 seats of the 543 of the total seats in Lok Sabha reserved for women. 28 of the 84 seats for SCs in Lok Sabha reserved for women. 15 of the 47 seats of the scheduled tribes in Lok Sabha reserved for women. 33% constituencies in all states reserved for women. Rotation of seats reserved in Lok Sabha and states after each delimitation. PM Modi has urged all parliamentarians to ensure that Nari Shakti gets its due representation in the House. It was later tabled in the Lok Sabha by Law Minister. Listen in. अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया। कई बार महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें। इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Reactions coming in. Union Minister Smriti Irani has responded on this historic occasion of the government tabling the Women's Reservation Bill. History has been made
first day of House in the new Parliament, and Nari Shakti Vandan Adhiniyam has been introduced by none other than Prime Minister Narendra Modi, ensuring that there be greater political participation for the women in coming days. To speak more about this, we have Women and Child Development Minister Mrs. Smriti Irani with us. Ma'am, what do you think that this bill would mean for women in general and for the country as well? This is a fight that has taken place for decades, so that women get a position of service and a position that is constitutionally granted to them. At the onset, I would like to give my gratitude to Honorable Prime Minister Shri Modi, that on Ganesh Utsav, we say that we begin with the blessings of a God that manifests solutions, Vignaharta. और विघ्न को हरने के लिए, like we say, the first introduction of a legislative agenda was that of Nari Shakti Vandan Bill. There is a belief in our country, in our communities, which is civilizationally available for anybody who wants to research, that when we step into new homes, the first person that we hope steps in is the lady of the household or the girl child of the household, so that she brings good tidings. Given G20's performance by India under its presidency, given the Chandrayaan success, this nation in a festive mood was welcoming the new parliament building. With it also we welcome a new era in Indian politics, where women will be not only treated as homemakers but also lawmakers. We have, through the Bharatiya Janata Party, manifested our organizational will to ensure that women are politically empowered. That is why we are the first political organization that introduced a resolution for the party to do reservation within the party. And I was one of the beneficiaries when Rajnath Singh ji became the president, including the finance minister now, Nirmala Sitharaman. The fact that for the first time we had a male president, but he introduced the women's reservation decision within the BJP. Sonia ji was then the Congress president. Irrespective of that, she never introduced the same facility for women in the Congress party. You know that the bill was first introduced in Parliament by Devi Gowda ji, then Atal Bihari Vajpayee ji made numerous attempts. The Congress and the Congress coalition partners always defeated the female agenda in Parliament. I am absolutely taken aback that the Congress today thumps its chest on an issue which is neither their introduction nor an issue that they have supported. In fact, when the Congress was in power in Rajya Sabha, they say Sonia ji is very adept at getting political parties together. The only agenda on which she could not get people together was the Women's Reservation Bill. Isn't it shocking? It passed in the Rajya Sabha not because the Congress coalition party wanted the passage of the bill, but because BJP, irrespective of being in opposition, stepped up and said we will support it because we believe in the emancipation politically of women. From 2010 to 2014, Sonia ji had all the time and had the numbers in Lok Sabha to ensure that she passes the bill. Why didn't she pass the bill? What is shocking yet that today, when the bill was introduced, Sonia ji was missing from the house. Her son left the house. When Speaker asked, do all political parties support the resolution to introduce the bill? Do they support the bill? Not a single Congress person either spoke in support or raised their hand to indicate physical support for the bill. What more needs to be said? Exactly what we were also wondering, the kind of sentiment that were echoed in support of the bill by the opposition parties, that was not complementary to the attitude on the floor. That's because the opposition member feels that they can do lip service to the media and nobody will catch out their lies. It was today telecast, and what they did on the floor of the house was telecast for the entire country to watch. Why was Sonia Gandhi missing? Why did Mr. Gandhi leave in a huff? Why didn't the Congress party support it verbally, or did their hands outstretched touching the sky saying that yes, we support it? But the opposition is saying that it was not lapsed as made by the That is an absolute lie, and that is why the Honorable Home Minister said that if you can, please authenticate this statement
on the floor of the House. Look at the audacity of Adhir Ranjan Chaudhary. He has till now not authenticated it. Please read the Constitution. If you have a copy here on page number 50, you will find in column 5 the entire article which says how when the government in a particular session, the session lapses, the bill lapses. For Mr. Adhir Ranjan Chaudhary, who was saying this at the direction of Mr. Rahul Gandhi, it was live for everybody to watch. I understand Mr. Gandhi does not read the Constitution, but I'm shocked that neither does Adhir. But there's sort of credit for her as well. When we asked Sonia Gandhi in the morning, she said it's ours. If it is so hers, why wasn't she present? If it is so hers, why did she deliberately allow it to lapse between 2010 and 14? अगर आप गांधी खानदान की सुने तो ब्रह्मांड की रचना उन्होंने की है, बिल तो छोटी बात है. So congratulations, ma'am, for congratulations to you too. So we hope that this bill will mean much more than this bill. The BJP, as the Prime Minister has said, we will, with the strength of the Bharatiya Janata Party and the N.D.A, pass it. Prime Minister is hopeful of cooperation from even the opposition. But like I said, the indignity that was thrust upon the House today by Adhir Ranjan Chaudhary ji's lies, I think is most unfortunate. Today at least was the day where they could have cooperated in the spirit with which we wanted to give a message to women across the country and people across the world that when it comes to women-led development, India now also constitutionally provides for it. That is the female leadership along with the men in our country that will lead us to a better future. Well, everyone hoped that the... Smriti Irani speaking exclusively to Times Now's Pragya Kaushika, but women achievers were also present in the House when the bill was tabled. Sample these reactions. हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, इस देश की महिलाओं के लिए इससे बड़ा सम्मानित नहीं किया जा सकता. इससे ज़्यादा न्यू पार्लियामेंट का पहला डे पहला सेशन था और इसमें महिला सशक्तिकरण महिलाओं के आरक्षण पे ही चर्चा की गई और पहला बिल जो प्रेजेंट किया गया है हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता हुई देख के कि औरतों के लिए जो मोदी जी ने ये बिल पास कराया डेवलपमेंट में, उससे क्या होता है एक तो इतने हमारा हिंदुस्तान में एक सिमिलर दर्जा हो गया, कंधे से कंधे मिला के आदमी और औरत हम लोग रह सकते हैं. और जैसे हमेशा बोलता है पहला मैं सबसे अच्छी मुझे ये बात लगती. Let's open this up. Joining us, Dr. V.K. Agnihotri, former Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, also former Secretary General of the Rajya Sabha. Dr. Agnihotri, thank you for speaking to Times Now. Thank you for your time, sir. Good evening. Your first thoughts on the Women's Quota Bill, now that it has been tabled once again? Well, this is, of course, well thought out and well honored move, which was earlier tried on 5 occasions, but it did not work, and everybody hopes that it will work this time. But in terms of processes and procedures, for introduction of a bill in a house, first it must be put on the list of business of that day, which must have been done, and copies of the bill have to be circulated to all the members of parliament. That is the initial requirement. At the time of introduction, also, apart from other members supporting the bill, there is also an opportunity to members to oppose it. A member can oppose the introduction of a bill on the ground that it is unconstitutional. Of course, there was no such opposition, but that is also a possibility at the time of introduction of a bill. Once the bill has been introduced, then the ball moves to the court of the presiding officer of the House. The presiding officer of the House has to decide whether to refer the bill to the concerned standing committee of Parliament. And in most cases, especially if it is a new bill, normally it has to be referred to the concerned committee. In the present case, it will be the Committee on Personnel, Public Grievances and Law and Justice.
But if the minister concerned is able to convince the presiding officer that bill is of such a nature that it must be taken up for consideration and passing immediately, right, then only the presiding officer in his wisdom may decide and give the option and the opportunity of to the government to move for consideration and passage of the bill. Now, Dr. Agnihotri, even if the bill is passed and as and when it is passed, there is a clause that says it will only be applicable after the delimitation exercise concludes. Yes, that is what is being said. So there is time for, implementation of the bill. It cannot be implemented immediately unless the delimitation exercise is over, and that is in 2026. Okay, Dr. Agnihotri, stay with us. More reactions coming in from across the country of women Chaupal celebrating Nari Shakti. Let's play out these reactions. This is where the female workers of the BJP are celebrating the women reservation bill. You can see behind me with the placards of Narendra Modi. The female workers of the BJP are celebrating the women reservation bill. We'll speak to them. कितनी उत्साह है इस बिल को लेकर के? उत्साह तो इतनी है कि बयान नहीं कर पा रहे हैं। आप माहौल भी देख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आप आए होते, आप लेट हो गए हैं, तो वहाँ माहौल देखते कि क्या चल रहा था। महिलाएं कितनी खुशी, आधी महिलाएं तो चली गई। तो आप बताइए मैम, आपका नाम क्या है? सीमा पांडे नाम है। अच्छा, तो कितनी खुशी है इस बिल को लेकर के? इस बिल को लेके बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। और हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने अभी सेलिब्रेट किया इस बिल को। इस बिल को तो ये पेंडिंग थी, पहले ही हो जानी चाहिए थी। 33% है, लेकिन हम लोग तो महिलाएं 50% के भागीदारी पे हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। पुरुष प्रधान देश में जहाँ लोग कहते हैं कि हम बेटियों को दान दे रहे हैं, महिलाएं या बच्चियां या बेटियां कोई सामान नहीं है जिसको आप दान कर रहे हैं। ये पुरुष प्रधान देश की ये थी, मानसिकता थी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने मतलब चेंज किया, परिवर्तन लाया। इसके लिए उनको तहे दिल से सारी महिलाओं की ओर से धन्यवाद। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ। मैम, कितनी खुशी है और जो जश्न आप लोग मना रही है वो सब दिख रहा है, चेहरे पर गुलाल लगी है, क्या देखिए बहुत बहुत खुशी है। हम लोग खुशी से समाये जा रहे हैं। इतनी खुशी है कि बयान नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटलेस, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं यहाँ सैला रजक प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, मैं यही की हूँ। बहुत खुशी है हम लोगों को। हम तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो हम लोगों महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है और हम लोग को आरक्षण देकर बहुत ही खुशी का माहौल दिए हैं। 33% विधानसभा और लोकसभा में हम लोगों का सीट मिला है। इसके लिए महिलाओं में नारी शक्ति में बहुत ही खुशी का माहौल है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और क्या कहेंगे? बिहार की समस्त महिलाओं की ओर से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आज गणेश चतुर्थी और तीज के अवसर पर जो उन्होंने महिलाओं के आंचल में खुशियां दिया है, हम सारी महिलाएं बिहार की समस्त नारी की ओर से उनको कोटि से आभार व्यक्त करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारा 2024 का लोकसभा चुनाव है, 40 का 40 सीट जीत करके पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। We are taking a quick break on Times Now. Lots more lined up when we return. Please stay with us. When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth
Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The news hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries to watch out? Because your voice must be heard, your questions answered, above all else. Frankly speaking with Navika Kumar. Can I have your attention please? क्या आप दिन की सही शुरुआत ढूंढ रहे हैं? I believe in an action-packed, fast-paced, agenda-setting start to the day. खबर सिर्फ दिखाना नहीं, असर होना भी जरूरी है। I'm Mamita Vadva. I'm Pratibha. मैं हूँ शिखा मल्होत्रा and you're watching the Morning News Hour. Whenever news breaks, you will see us. Process it, analyze it and broadcast it. After the spot reporters, we are the first responders. We are at the front line of every news event. We are situation analysts, raw, live and unedited. Pure news, pure passion. Times Now, action begins here. When news is troubling. They rented this house right here and 3 days later she was murdered. When news is for common man. We are asking you for the Aam Aadmi that why the proper checks and balances were not done, sir. When news is for nation. Right now I'm just few meters away from Pakistani force which is acting as launch pads for terrorists. When news is exclusive. We are reporting from few miles away from the line of factual control. We report from ground zero. Times Now. Action begins here. Explosive, exclusive and beyond. The show that gets you the inside track. A deep dive into stories that matter. Raising questions you won't ask. Your voice is now our voice. Watch Blueprint with me, Meghna, And Pranesh. at 6:30 p.m. every weekday. Only on Times Now. When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The news hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries to watch out? Because your voice must be heard, your questions answered, above all else. Frankly speaking with Navika Kumar. Can I have your attention please? क्या आप दिन की सही शुरुआत ढूंढ रहे हैं? I believe
believe in an action-packed, fast-paced, agenda-setting start to the day. खबर सिर्फ दिखाना नहीं, असर होना भी जरूरी है. I'm Mamita Wadhwa. I'm Pratibha Tehushika Malhotra, and you're watching the Morning News Hour. अच्छा लग रहा है कि मोदी जी ने ये जो इतने टाइम से पेंडिंग पड़ा था ये पास हो रहा है. इस वुमेन के लिए जो रिज़र्व की गई हैं 33% जो लोकसभा में है, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है महिलाओं को मिलेगा और काफ़ी कुछ तरक्की होगी. मतलब अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें अगर महिलाओं के तौर से कि हमारा भी जो भी हमारे राइट्स हैं वो आगे आएंगे. जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं, हमारी सेफ्टी को लेकर जो भी थोड़ी बहुत रह गई है कमी, तो फिर वो दूर होगी. ठीक है. तो महिलाओं की भागीदारी अगर संसद में बढ़ेगी, विधानसभा में बढ़ेगी, तो क्या लगता है कि जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, उनके अधिकारों के बारे में भी ज़्यादा काम हो पाएगा? बिल्कुल सर. अगर जैसे लोकसभा में या संसद में हमारी जब रिजर्वेशन सीट्स महिलाओं के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे सबके हित में ही होंगी, क्योंकि एक महिला जो है वो एक महिला का जो भी राइट है वो बहुत अच्छे से जानती है, तो वो हमें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे संसद में. तो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी हो रही है कि अगर हमारी रिजर्वेशंस हो रही हैं तो वो बहुत अच्छी बात है. मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर. कोई सुझाव आप देना चाहें? क्या होना चाहिए? मैं यही चाहूँगी कि जो भी लेडी कैंडिडेट वहाँ पे खड़ी होती है तो वो एक जो भी हमारी गर्ल्स को लेकर आज के टाइम में एक तो उनका कंट्रीब्यूशन सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि सारी लड़कियाँ आज के डेट में काम करें, इंडिपेंडेंट बने. तो मैं ये चाहूँगी कि हर जगह हर सेक्टर में जो लेडीज़ हैं उनकी मतलब उनके लिए भी रिजर्वेशन होनी चाहिए हर सेक्टर में. ठीक है. क्या फ़ायदा होगा लड़कियों को, महिलाओं को जो आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को 33%? सर ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए भी कि विमेंस को इतना सपोर्ट मिल रहा है और 33% जो है वो काफ़ी अच्छा रेशियो है. हो सकता है आगे आने वाली फ्यूचर को विमेंस एम्पावरमेंट में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट लाएगा ये. सो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट का कि उन्होंने ये लागू किया है. आई होप सो कि ये बिल भी पास हो जाए जल्दी से जल्दी, इसका सॉल्यूशन निकले और आगे चल के हमारी जो विमेन एम्पावरमेंट है वो और भी ज़्यादा बड़ी हो. ऐसी कोशिशें पहले भी हुई हैं, राज्यसभा में पहले भी ये विधेयक आया था लेकिन पारित नहीं हो पाया. क्या लग रहा है इस बार सब हो जाएगा ठीक? जी सर, मुझे लगता है कि इस बार मोदी सरकार है तो आई गेस कि वो ज़रूर इसमें बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है. थैंक यू सर. जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस बिल को? सर मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ ऑल द वुमेन्स को, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें भाग लें और आगे बढ़ें. ये हमारी अगर एक वुमेन ही इसमें होगी तो वो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे फेसेस करते हैं, वो सब कुछ सॉल्व होएगी. बिल्कुल. देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब महिला When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं. देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से
कर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries to watch out? Because your voice must be heard, your questions answered above all else. Frankly speaking with Navika Kumar. Can I have your attention please? क्या आप दिन की सही शुरुआत ढूंढ रहे हैं? I believe in an action-packed, fast-paced, agenda-setting start to the day. खबर सिर्फ दिखाना नहीं, असर होना भी जरूरी है। I'm Amita Badwa. I'm Pratibha. मैं हूँ शिखा मल्होत्रा and you're watching the Morning News Hour. Whenever news breaks, you will see us. Process it, analyze it, and broadcast it. After the spot reporters, we are the first responders. We are at the front line of every news event. We are situation analysts, raw, live and unedited. Pure news, pure passion. Times now, action begins here. When news is troubling. They rented this house right here and 3 days later she was murdered. When news is for common man. We are asking you for the Aam that why the proper checks and balances were not done, sir. When news is for nation. Right now, I'm just few meters away from Pakistani post, which is acting as launch pads for terrorists. When news is exclusive. We are reporting from few miles away from the line of factual control. We report from ground zero. Times now. Action begins here. Explosive, exclusive and beyond. The show that gets you the inside track. A deep dive into stories that matter. Raising questions you won't ask. Your voice is now our voice. Watch Blueprint with me, Meghna. And Pranesh. At 6:30 p.m. every weekday. Only on Times Now. When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol. Welcome back to Live Wire and a very good evening. I'm Siddharth Talia. Now, Justin Trudeau's ratings, he's the Prime Minister of Canada, his ratings continue to plunge on a month-to-month basis. The personal image of the Canadian Prime Minister has worsened thanks to his free run to Khalistani terror in Canada. And now, in yet another testimony to that, Justin Trudeau made a very bizarre statement. He blamed India for the killing of a Khalistani terrorist, Hardeep Singh Nijjar. India read the Riot Act to Justin Trudeau when he was in India for the G20 summit, and it has now expelled a top Canadian diplomat as well. Extremely serious matter. I just informed the leaders of the opposition directly that I want now to speak with all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them
personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. In the strongest possible terms, I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by three principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. Now, after India has rejected Justin Trudeau's charges, Justin Trudeau has decided to get in touch with his counterparts in the United States, in Great Britain, and also in France. He's spoken to Joe Biden, Rishi Sunak, as well as Emmanuel Macron. So that's, of course, the diplomatic maneuver that Justin Trudeau is now trying to pull, trying to get in touch with some other Western governments in order to corner India on this matter. Let me go across now to Rishabh as well as Bhavtosh for more on this. Rishabh, coming to you first. Now, India's given a categorical response saying that it has absolutely nothing to do with what happened to Nijjar in Canada, has denied the allegations outright, and also reiterating the fact that people like him, among others, have enjoyed a free run in Canada for an extended period of time, something that our Prime Minister also sought to remind Mr. Justin Trudeau of when he was here during the G20 summit. Well, definitely, if you see India's response, India is very clear that what's happening in Canada is of a grave concern for India. And even if you remember the handout that came out after the bilateral meeting between Justin Trudeau and Narendra Modi back on 10th of September when they met on the sidelines of G20, it also mentioned that how Indian Prime Minister has raised the concerns that India have and how the anti-India activities in Canada has been raised with Justin Trudeau in the pull-aside meeting on September 10th. After that, there have been a lot of allegations and, reprimanded, and the Prime Minister himself, Justin Trudeau, the Canadian Prime Minister himself, was reprimanded by the local press for being schooled by his Indian counterpart. And what we saw is basically a reaction to it. As you mentioned, that given the, approval ratings that Justin Trudeau is losing every passing day, this is in a way more than diplomatic. It is to satisfy the domestic politics of Canada and his party interests in the upcoming election, and that's the reason that such allegations have been made after an emergency statement was called in by the Prime Minister. Yes, Rishabh. In fact, let me take this across to Bhavtosh as well. Bhavtosh, you of course given us a backdrop over Hardeep Singh Nijjar, the terrorist, the Khalistan terrorist who's been enjoying a safe haven in Canada for an extended period of time. He's been living there since 1997. But he's not the only one who's been patronized by certain political elements in Canada, which unfortunately has a notorious history of providing shelter to these kind of dubious individuals. Yes,
Siddharth, in fact, adding to what Rishabh has said, right from the time when Kanishka air crash happened, India had been asking Canadian authorities to, in fact, extradite people or terrorists who are hiding there. But at no point of time, Canada has helped India. Whether it's the case of Goldie Barar to Lakwinder Singh Landa, or even in case of other terrorists, they have not even been detained, though there is an active red corner notice against them. Someone like I.N.D.I.A, who has been listed as a terrorist under UAPA, he is continuously issuing threat. Even yesterday, when a Congress leader was gunned down in Moga, he used social media and then claimed responsibility for that. That case is still under investigation. One has to wait and see whether actually I.N.D.I.A had been involved in that killing or not. But what it shows is that there are several individuals who, against whom red corner notice is there. Remember in April 2018, when Trudeau for the first time came to India and met Captain Amrinder Singh, a list of 19 terrorists was handed over to him by Punjab CM, then Punjab CM. Sure. None of them have even been detained once. That clearly shows that Canadian politics, domestic politics, override even international cooperation, which is required. And one also remembers Interpol. Captain Amrinder Singh during a previous visit by a Canadian delegation to India, refusing to meet the then Canadian Defence Minister because Mr. Amrinder said that he has Khalistani antecedents. Let me take a short break right now. We'll come back with more on the other side. Thanks, Bhavtosh, as well as Rishabh, for your inputs. When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9, only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries to watch out? Because your voice must be heard, your questions answered, above all else. Frankly Speaking with Navika Kumar. Can I have your attention, please? क्या आप दिन की सही शुरुआत ढूंढ रहे हैं? I believe in an action-packed, fast-paced, agenda-setting start to the day. खबर सिर्फ दिखाना नहीं, असर होना भी जरूरी है. I'm Mamita Vadva. I'm Pratibha Tehusha Malhotra, and you're watching the Morning News Hour. Whenever news breaks, you will see us. Process it, analyze it, and broadcast it. After the spot reporters, we are the first responders. We are at the front line of every news event. We are situation analysts, raw, live, and unedited. Pure news, pure passion. Times Now. Action begins here. When news is troubling. They rented this house right here, and 3 days later, she was murdered. When news is for common man. We are asking you for the I.N.D.I.A that why the proper checks and balances were not done, sir. When news is for nation. Right now, I'm just few meters away from Pakistani force which is acting as launch pads for terrorists. When news is exclusive. We are reporting from few miles away from the line of factual control.
We report from ground zero. Times now. Action begins here. Explosive, exclusive, and beyond. The show that gets you the inside track. A deep dive into stories that matter. Raising questions you won't ask. Your voice is now our voice. Watch Blueprint with me, Meghna, And Pranesh. at 6:30 p.m. every weekday. Only on Times Now. When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough questions like no other journalist. आपके ऊपर तो कई घोटालों के भी आजकल आरोप लग रहे हैं। देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई। She takes on the masters of Indian politics like no one else can. विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कह रहा है कि आप हवा बना रहे हैं, निवेश कोई आया ही नहीं इस राज्य में। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। Because she speaks for you the way no one else can. What about the charges against the government that this is a favored company by the government? How do you look at India on the world map of countries? Welcome back. We continue our coverage of the fallout of the comments made by the Canadian Prime Minister Justin Trudeau blaming India for the killing of Hardeep Nijjar. Now, security has been stepped up outside the Canadian Embassy, the Canadian High Commission, I beg your pardon, in the national capital. So, those are the visuals that you see, and there has been a stepping up in terms of the security arrangements outside the Canadian High Commission in the national capital. Here's a report by Rishabh. After the Canadian Prime Minister Justin Trudeau made an emergency statement to the Canadian Parliament alleging that India and Indian government was involved in killing of Hardeep Singh Nijjar, proclaimed Khalistani terrorist back in June this year, and the Foreign Minister of Canada coming out and saying that Canada has expelled a senior Indian diplomat posted in Canada for his involvement in killing Nijjar, India has acted swiftly. First, this morning, India dismissed the claims made by Canada, calling it baseless and unsubstantial, and also noting that this is nothing but a diversion technique that Canada is using to remove the focus from the increasing Khalistani extremism in Canada. Later in the day, the Canadian High Commissioner to India was summoned by External Affairs Ministry and handed over demarche and also a letter that says a senior diplomat of Canada that was posted here in New Delhi has been expelled. The sources who understand the diplomacy and India-Canada relation and is privy to the information has confirmed to Times Now that he was Sylvester Oliver Sylvester, the chief of Canadian Intelligence Agency, the station head here, has been expelled. He has been given 5 days to leave the national capital. Well, that's it that we have for you for this bulletin. We'll slip into a short break right now, but our coverage will continue on the other side. Stay tuned. When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using
petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white. Not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The News Hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. She asks tough. Welcome back. Let's turn our attention right now to Jammu, where the Dogra community has protested against Justin Trudeau over the remarks that he made against the Indian government in the Canadian Parliament. We're bringing those visuals to you very shortly, where members of the Dogra community have decided to protest against the Canadian government in Jammu, firstly for the kind of comments that came from Justin Trudeau, and secondly for their decision to send back one diplomat from Canada to India. Here's a report. Let me in fact go across to my colleague Pradeep. You can see here the Dogra front activities. They are protesting against Canadian Prime Minister Justin Trudeau for appeasement policy towards Khalistani terrorists. They are protesting that how come Justin Trudeau blamed Indian government for the killing of a Khalistani terrorist, Hardeep Singh Nijjar, in the month of June this year. The Nijjar was a terrorist who was responsible not only for Ludhiana bombing but also for the killing of the Hindu priest, and he was providing